Hello everyone. First of all, I would like to congratulate Department of Botany for successfully organizing this 2 days international e-conference on CTRBEPR 2020. Three thematic areas of this conference are biodiversity, environment, and plant resources. They have been covered very nicely on the day one, that is on 25th November. And I can say it firmly because I am not from biology field. Still, I learned a lot about the threshold areas of research after attending yesterday's conference. Biodiversity is collapsing worldwide. This loss in biodiversity is responsible for all the havoc created in the present scenario. Health issues are disrupting our normal life. Disease like cancer and diabetes are prevailing all over the world. I would like to quote here about yesterday's international speaker, Dr. Lalit Batra. His presentation was relevant to the present situation. He talked about cancer, immunotherapy, prevention, and therapeutics. He related the topic with COVID-19 and discussed about type 1 diabetes, which is creating manic into word in the day-to-day life. Then the deliberation of Dr. Samanno Datta was directly in the interest of our researchers and students. She discussed about the major ecological and environmental challenges which we are confronting in India. The improvement of water and air quality, global warming, and climate change are the burning issues. Various speakers who presented orally and discussed about their research in ecotourism, bioremediation, and waste management, etc. Such topics were really in the benefit of young students and research scholars who are in the search of good work. Definitely, they are going to help present day society. Today, as I have been told that there will be the deliberation of Dr. N.K. Dubey, professor from BHU Varanasi, who is one of the 19 scientists enlisted by Stanford University. This is really a matter of pride for us to have a person of such stature among us. The next speaker of today, Dr. Padmanabh Dwivedi, will speak about the topic micropropagation and biodiversity conservation with special references to medicinal plants and orchids. Both scientists are prolific writers and eminent researchers, and really we are privileged to have their deliberation in today's conference. Some issues which I want to discuss with you all: the biodiversity losses. It has been told that biodiversity is collapsing worldwide, climate is changing, and environment is being directly affected by diversity loss. Definitely, it is a high time for all of us to wake up and deal with the grim situation judiciously. With these words, I conclude and hand over the session to Dr. Poonam Jaiswal. Good luck. Thank you, sir. Good morning to all. Welcome to CTRBEPR 2020. Myself, Dr. Poonam Jaiswal. I feel proud to introduce to you a person for whom words feel short. Dr. N.K. Dubey, Professor in Botany, Banaras Hindu University, Varanasi, a university which is ranked third in the list of top 10 universities in the country by National Institutional Ranking Framework released by Ministry of Human Resource Development. Professor Dubey himself is listed in world's top 2% scientist list released by the Stanford University. He is fellow National Academy of Science, National Academy of Agricultural Science, Indian Botanical Society, Indian Phytopathological Society,
Mycological Society of India, and also a visiting fellow in University of Bardhaman, West Bengal. As an enthusiast scientist, he is recipient of Young Scientist Award of Indian Science Congress Association, Professor P. Maheshwari Gold Medal of Indian Botanical Society, Dr. S.R. Bose Memorial Award of Indian Mycological Society, Professor M.J. Narasimhan Academic Merit Award of Indian Phytopathological Society. Dr. Dubey has been recognized among top reviewer by National Academy of Science and has received top reviewer award for exceptional contribution to the quality of international journals of food microbiology by Elsevier. Professor Dubey has 324 research publications and 13 books and 4 patents to his credit. He is also editor of Indian Phytopathology and subject editor proceeding of National Academy of Science under banner of Springer. Professor Dubey has chaired and coordinated sessions in many national and international conferences. To name a few, 9th International Congress of Plant Pathology, ICPP 2008, held in Torino, Italy. As subject expert, he is associated to Union Public Service Commission and many state public service commissions like Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Odisha, Himachal Pradesh, Jharkhand, Punjab, and Rajasthan. He has vast academic administrative experience also as coordinator applied microbiology and many more. Professor Dubey has been a brilliant academician as proved by recipient Young's Academic Award of BHU, that is Malviya Memorial Award, and awarded Most Productive Research Award 2019 by Institute of Science, BHU. Only this much of introduction is not enough if I do not mention his dedication towards his students. I am very glad to welcome a dedicated teacher, an enthusiastic researcher, eminent academician, and very good motivator, Dr. N.K. Dubey. Welcome, sir. कहिए सर, उसको ऑन मैंने okay. Okay, am I audible? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay, very good morning, and I am very happy to see Poonam Jaiswal here. Her introduction, although it is lengthy, but देखो एक किसका है बता दिया तो उसी का है, पूनम का है. If you have any, okay, okay, कोई बात होगा तो हमारे मोबाइल पर फोन कर देना. ठीक है सर. And I am very much delighted to deliver a talk. Good morning to everyone and thankful to the organizers. I am not remembering the names actually. Yesterday I had to deliver the talk, but I had to go to passport office regarding my passport. And today there was a visit of Vice Chancellor to my department, and just he has gone. And electricity is also there was some cut in electricity, but now luckily everything is fine, and directly I should come to my lecture. I am very happy to deliver the lecture. ओके, यहाँ से ना, अच्छा ठीक है, अच्छा आ रहा है. पीपीटी हमारी आ रही है ना? हाँ सर, बिल्कुल शो हो रही है. अच्छा ठीक है, तब चलो ठीक है, तब चलो तुम लोग, कोई आएगा तो मोबाइल से हमको बता देना, उसी पर फोन करेंगे, ये कनेक्शन मिस होगा तो आई एम वेरी हैप्पी. एंड द टॉपिक विच आई हैव सेलेक्टेड, दैट इज यू सी ए पॉपुलर टॉपिक, एवरीवन can understand. That is, you see, there is a slogan, popular slogan, and that is a opposite to that slogan. My lecture is ki
The slogan is act, think globally, act locally. Think globally and act locally. But my slogan is think locally, act globally. And that is with reference to Indian medicinal plant knowledge. This I have selected here. And in this lecture, I shall try to present before you. You see, this is the era of a modern system of medicine. Several antibiotics are here. But even in this era, why I am delivering lecture on this medicinal plants, particularly ethnomedicine? So this will be the first thrust of my lecture. The second thrust of my lecture will be if India has huge opportunity in the field of medicinal plants. So what are these opportunities and what is our share in global herbal market? If we have so many medicinal plants, marvelous medicinal plants, so our share in global medicinal herbal market should also be very appreciable. I shall discuss on this issue. If that is not so appreciable, what are the bottlenecks and what our government is doing behind this? These are some thrust on which I shall concentrate my lecture. Friends, in the year 2015, United Nations General Assembly has framed 17 agenda for sustainable development in different fields. That is, and these agendas has to be completed by 2013. There are 17 goals of sustainable development, and goal 3 is related to health. And the goal 3 is ensure healthy lives, promote well-being for all at all ages, childhood up to old age. We have to give health security, promote health to everyone, and that should be the health promotion should be safe, effective, quality, affordable to everyone. I shall try to present before you how these medicinal plants may be an important component of the goals of United Nations organizations for sustainable development. This I shall try to present before you. And friends, there is a campaign of India, Make in India campaign of our Prime Minister Narendra Modi. And this Make in India campaign aims to provide many jobs, huge jobs to our young people. People think that this Make in India program, in this Make in India program, only this information technology, computer, physics, chemistry is the important component. But friends, agriculture and pharmaceutical sectors are two important pillars on which human civilization is built up. And I shall try to present before you how the medicinal plants, components of medicinal plants may be important component, ingredient of this Make in India campaign. Friends, even in the era of this modern system of medicine, allopathic system of medicine, there are many reports, many time report 80% population of the world is behind the use of medicinal plants. Still today, 80% population, they are using medicinal plants for cure of their health, in form of cosmetics, in form of spices, boosting immunity in our body. So this is 80% population of the world, they think. And why this 80% population is behind the use of medicinal plant? Earlier we were using medicinal plants. There were no allopathic system of medicine. The antibiotics were not discovered. But the use of medicinal plant was slow in cure of the diseases. But later on, the antibiotics were discovered, and these antibiotics cured the disease very rapidly in short duration. Different antibiotics were discovered, and on the discovery of one antibiotic, one Nobel Prize was given. One Nobel Prize
for one antibiotic, and these antibiotics were regarded as magic bullet. बहुत जल्दी बीमारी को कंट्रोल कर रही है, इनको मैजिक बुलेट कहा गया है ना। एक नया चीज आ गया कंट्रोल को, है पॉल हर्लिक ने कहा और प्राइज दिया गया। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ऑल ऑफ अस नो दैट कि अर्लियर वी वर टेकिंग तुलसी का काढ़ा हम लोग लेते थे, डिकॉक्शंस लेते थे, भस्म लेते थे, मेडिसिनल प्लांट का पाउडर लेते थे, और उसमें एक कंपोनेंट नहीं होता था, मेनी कंपोनेंट्स टुगेदर सिनर्जिस्टिकली acting together. Some of the components may be enhancing the efficacy of the active principle. But in case of antibiotics, what is there? The antibiotics are single molecule compound. Single molecule compound formulated in form of antibiotic. Single molecule compound, single mode of action. उनका mode of action अकेला mode of action है. Because of this, there are many reports on development of resistance amongst the microorganism against the antibiotic. Antibiotic का single mode of action है, तो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, एंड दीज एंटीबायोटिक्स बिकम्स आउट ऑफ डेट, जिस पर हम नोबेल प्राइज दिए, मैजिक बुलेट की कहे, वो एंटीबायोटिक आफ्टर 5 years that becomes ineffective, and another antibiotic is discovered, another Nobel prize is given. You see ये होता रहा है सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक. तो the development of resistance amongst the microorganism, that is must. माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि अपने प्रोजनी को खत्म कर देगा, या बौद्ध धर्म जैसे कलिंग का लड़ाई हुआ और खून खराबे को देख करके अशोक बौद्ध धर्म मान गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करेगा. तो because of the development of frequent development of resistance amongst the microorganism, this is one major reason. Still today there is revival of the use of medicinal plants, and 80% population of the world, they are behind the use of medicinal plants. Not only this, today we are using, you see, modern system of medicine, उसको हम यूज करते हैं, बट देयर आर मेनी कंपोनेंट्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स which are used in modern system of medicine, and there is report कि 50% of the newly approved drugs since 1994 they are plant based. यहाँ बॉटनी के टीचर बैठे हुए हैं लोग. There are many medicinal plants like Rautia serpentina, जिसके की प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. Many anti-cancerous plants and their products are used in modern system of medicine. One example is we are using aspirin as anti-inflammatory drug. This aspirin is used, but this aspirin is nothing. Aspirin हम anti-inflammatory drug के रूप में यूज करते हैं modern एलोपैथी में, but this aspirin is nothing but synthesized analog of salicin, which is found in the bark of Salix alba. Salix alba के bark में salicin पाया जाता है. The Salix alba is known as a willow plant, and ethnomedicinally it was used by Native Americans. But the German company Bayer that formulated aspirin based on the salicin. I wanted to say that there are many plant-based products which are important component of modern system of medicine. बात यह है कि आदमी जब आया and there was no antibiotics, तो क्या था? He was not knowing about the agriculture. हम खेती करना नहीं जानते थे, गेहूं पैदा करना नहीं जानते थे. आदमी जब इस धरती पर आया, आदि मानव ही आया होगा 5000 साल पहले, तो वो कुछ खाता होगा. तो देखिए वो क्या खाता था 5000 साल पहले, when we were not using agriculture, no knowledge of rice cultivation or wheat cultivation. हम राइस को खाते हैं, राइस को खाते हैं कि हमारी भूख खत्म हो जाए, इसके लिए हम राइस को खाते हैं. लेकिन पहले क्या था कि the earlier people, Indian people, they used to eat 7000 years.
क्या था, एक पौधे के दाने को खाते थे, दैट इज नोन एज क्विनोवा सीड्स, क्विनोवा लीव्स, एंड दिस क्विनोवा इज चिनोपोडियम क्विनोवा, चिनोपोडियम क्विनोवा, क्विनोवा लीव्स, चिनोपोडियम क्विनोवा। So we used to eat this quinoa, Chinopodium quinoa, but this now it has been documented. कैसे आ गया, इसको खत्म करो। तो सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है ना। अच्छा, हाँ, लेकिन अब ये पता चला कि ये जो क्विनोवा सीड है, ये क्विनोवा सीड दैट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, दे आर फाउंड ओनली इन एग, दे आर फाउंड इन मिल्क, दे आर फाउंड इन सोयाबीन। लेकिन पहले जो हम खाते थे क्विनोवा सीड्स को, तो उसमें सारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाई जाती थी। मतलब ये है कि 7000 साल पहले जो हम थे, हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम केवल हंगर को मिटाने के लिए गेहूं चावल नहीं खाएंगे, ऐसे पौधों को खाएंगे कि हमारी भूख भी मिले, खत्म हो, और हमको सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले, हमको गुड क्वांटिटी में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन मिले। आज न्यूट्रास्यूटिकल टर्म आया है, आज आया है, लेकिन हमारी टेंडेंसी 7000 साल पहले थी न्यूट्रास्यूटिकल की, हम ऐसे खाने को खाएं जिससे कि हमारा मेडिसिन का भी काम आए और भूख भी मिले। बेस्ड ऑन दिस, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड द ईयर 2013 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्विनोआ। ये मनाया गया एक पौधे के नाम पर, न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट के नाम पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्विनोआ मनाई। और अपने कंट्री में लड़कों के लिए मैं बता रहा हूं, देयर इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एज मैसूर, CFTRI जिसको कहते हैं। अपनी कंट्री जब 1947 में आजाद हुई, तो 15 दिन बाद मैसूर के राजा ने उनके किले में वो फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR द्वारा बनवाया गया। दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर कंट्री इन साइंस। और एक क्विनोआ सीड्स को लेकर के इन आवर कंट्री देयर आर मेनी रिपोर्ट्स ऑन माल न्यूट्रिशन एमंग्स द चिल्ड्रन। तो दीज क्विनोआ सीड्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल फूड टू कम्बैट malnutrition in our country. तो दिस इज यू सी क्विनोआ सीड्स आर अर्लियर वी वेर यूजिंग, आज हम चाय को पी रहे हैं, चिया सीड्स, साल्विया हिस्पैनिया। देखिए उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है। पहले हमारी क्या टेंडेंसी थी कि दिस चिया सीड्स कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड omega-3 fatty acid. Our students should know omega-3 fatty acid is very important for the functioning of our heart. तो पहले long back our tendency was to eat something which is efficacious for our body in control of cure of different diseases, may be used as nutraceutical. The second thing is कि हम देखो आयुर्वेदिक दवा को लेते हैं, मधु के साथ लेते हैं। क्यों मधु के साथ लेते हैं? मधु कोई दवा तो है नहीं, मधु तमाम दवाओं के इफिकेसी को बढ़ा देता है। इसको हम कहते हैं बायो इनहांसर। देयर आर मेनी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, मे बी दे आर नॉट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट बट इनहांस द इफिकेसी ऑफ other products in the plant, and such products are known as bioenhancer. Like one bioenhancer is piperine, जो काली मिर्च हम खाते हैं पाइपर निग्रम से, पाइपरीन वो निकाला गया। एंड दिस पाइपरीन इनहांसेज, बढ़ा देता है, इंक्रीजेज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी एंटीबायोटिक्स,
क्रेडिट गोज टू आवर कंट्री कि अपने कंट्री से सबसे पहले बायो इनहांसर निकाला गया फ्रॉम काली मिर्च बाय डॉक्टर CK अटल रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू। तो पौधों में इस तरह के कंपोनेंट हैं कि जो कि एंटीबायोटिक के इफिकेसी को बढ़ा देते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, this is the importance of the plant products, okay? And because of these plant products may be important component in this third goal of the United Nations Organization for Sustainable Development or the Make in India program of our country। कैसे कैसे पौधे अपने कंट्री में है, देखिए कि एक पौधा है, दिस इज नोन एज ट्राइकोपस जिलेनिकस। दिस प्लांट इज फाउंड ऑन वेस्टर्न घाट, अपने वेस्टर्न घाट पर पाया जाता था। इस पौधे का ये है कि अपने यहाँ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, हम लोगों के स्टूडेंट को जानना चाहिए, और उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर पुष्पांगदन। वो केरल के रहने वाले थे और पहले त्रिवेंद्रम के बोटेनिकल गार्डन में थे। प्लांट का सर्वे करने वेस्टर्न घाट गए, पहाड़ पर गए, थक गए, गेस्ट हाउस में एसी कमरे में आकर के बैठ गए, थकान हो गई उनको। हम लोग ये करते हैं, थोड़ी देर में थक जाते हैं, लेकिन वहां जो इथनिक ट्राइब्स थे, रहने वाले थे, वो क्या थे, जब चाहते थे पहाड़ पर चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, उनको थकान ही नहीं लगती थी। डॉक्टर पुष्पांगदन कॉन्टेक्टेड वन इथनिक ट्राइब, कानी ट्राइब, उससे पूछा कि तुम्हारा भी वही है ब्लड, हमारा भी वही ब्लड है, तुम थकते नहीं हो, मैं थक क्यों जाता हूँ। दोज कानी ट्राइब रिपोर्टेड कि ये जो पौधा है इसके ट्यूबरस रूट को हम खाते हैं और हमारे थकान को दूर कर देता है। देखिए कैसा ये पौधा है कि आप इसको खाइए, दिन भर काम करिए और आपके थकान को दूर कर देगा। गो फ्रॉम टायर्ड टू अनटायर्ड। Dr. Pushpangadan worked on this plant and he got American patent और एक फार्मुलेशन बना that is known as आरोग्य पच्चा from the Trichoepis jilenicus dioscoriaceae family। तो ऐसे पौधे हमारे पास हैं। कोई भी देखिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है कि हमारे थकान को दूर कर दे, लेकिन हमारे पास पौधे हैं कि हम दिन भर पढ़े, काम करें और हमारे थकान को दूर कर दे। तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर ऑन द अर्थ। फ्रेंड्स, कैसे पता चला कि पौधों में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है? कहां से पता चला? आज हम एसी कमरे में बैठे हुए हैं, लेक्चर दे रहे हैं, एसी कमरे में हम रिसर्च करते हैं। आपके यहाँ का लेक्चर थिएटर जो है वो एसी फिटेड होगा, लेकिन पहले क्या था कि हमारे जो ऋषि थे वो जंगल में रहते थे, जानवरों के साथ रहते थे, जानवरों के एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्विंग द एक्टिविटी ऑफ आवर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, दे केम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे कि हिमालय के तराई रीजन में हमारे आवर ग्रेट ऋषिज, इंडियन ग्रेट सेंट्स, दे ऑब्जर्व दैट कि व्हेन कोबरा फाइट्स, व्हेन नेवला मैंगूज फाइट्स विद कोबरा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है, हमारे स्टूडेंट देखे होंगे सांप नेवले की लड़ाई, कठिन लड़ाई होती है, तो हमारे ऋषि देखे उस लड़ाई के पहले नेवला जाता है और एक पौधे के रूट को खोद करके खाता है और तब सांप से लड़ता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और उससे लड़े। वी केम टू नो अबाउट ए प्लांट that is known as सर्पगंधा, Rauwolfia serpentina। So in this way we came to know about different types of medicinal plants, Rauwolfia serpentina, सर्पगंधा। जंगल में जानवर की एक्टिविटी को देख करके हमको पता चला, और आज पढ़ाया गया होगा आप लोगों के बीएससी के कोर्स में, उसके रूट से more than 22 alkaloids have been isolated। Are our great saints, they saw कि जब चिंपैंजी का पेट गड़ने लगता है, पेट में दर्द होता है, तो फॉर सेल्फ मेडिकेशन he eats the plants of हल्दी, अदरक, जिंजीबरेसी के पौधों को खाता है। We came to know about medicinal properties of जिंजीबरेसी, हल्दी, अदरक। तो this zoo pharmacology helped us very much in discovery of different types of herbal medicinal plants and
sitting on the bank of Ganga, Jamuna and Saraswati, our great saints observed different types of animals and we came to know about medicinal property of different plants. आज जो है क्या एरा है कि साइंस में दो तरह का रिसर्च होता है। एक रिसर्च है कि हम पेपर छापते चले, कॉन्फ्रेंस कराते चले, पेपर छापते चले, है, और दूसरा रिसर्च है कि जिसको हम कहते हैं एडवेंचर्स इन साइंस, बड़ा रिसर्च उसको हम कहते हैं। एंड दैट एडवेंचर इन साइंस इज कि चंद्रमा का खोज, एडवेंचर इन साइंस हल्ला हो जाएगा, चंद्रमा का खोज, मंगल ग्रह का खोज, या एक साथ इसरो 100 सैटेलाइट छोड़े, दिस इज एडवेंचर्स इन साइंस। लेकिन लोग ये सोचते हैं, गलतफहमी ये है कि ये एडवेंचर इन साइंस केवल फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, कंप्यूटर से आएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आएगा। ऐसी बात नहीं है, हमारे बॉटनी से, हमारे प्लांट साइंस से भी ऐसे तमाम काम किए गए हैं पास्ट में जो कि चंद्रमा का खोज और मंगल ग्रह के खोज से कम नहीं है। आज कोरोना हुआ है, हम लोग घूम रहे हैं चारों तरफ की कोरोना के लिए कोई दवा निकल जाए। ऐसे ही 1720 में पैंडेमिक आया, 1820 में आया, 1920 में आया, 2020 में आया। कोई नहीं, कोई दवा, आज तो हमारे पास रिसर्च करके हम खोज सकते हैं, वैक्सीन खोज रहे हैं। 1720 में साइंस डेवलप नहीं था। और उस समय मलेरिया जब होता था 1720 में, गांव का गांव मलेरिया से खत्म हो जाता था, लोग मर जाते थे। देयर वाज नो मेडिसिन फॉर मलेरिया। पेरू में पैंडेमिक फार्म में कोरोना जैसे मलेरिया आया था, लोग मरते जा रहे थे मलेरिया से। एक बुढ़े आदमी को मलेरिया हुआ और वो बुढ़ा आदमी सोचा कि अब तो हम मर जाएंगे, हमारे लड़के परेशान होंगे। उसने कहा कि चलो हम जंगल चल रहे हैं, अपने लड़कों को सब अपने खेत के बारे में, बैंक ड्राफ्ट के बारे में सब बता करके, डीडी के बारे में, और जंगल में चल दिया कि मरेंगे वहां। लेकिन वो मर नहीं रहा था, आदमी घूम रहा था चारों तरफ। वो थक गया, घूमते घूमते उसको प्यास लगी। जब उसको प्यास लगी तो उसको एक पोखरा दिखाई दिया, पोखरा दिखाई दिया। उस पोखरे के पानी को पीने हो गया, लेकिन उस पोखरे के पानी से बदबू आ रही थी। उस पोखरे के पानी को पीने गया, बदबू आ रही थी, वापस चला आया। बट ही वॉज बाउंड टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड। उस पोखरे के पानी को पीना था उसको। उस पोखरे के पानी को पिया, उसको नींद लगी, थकान थोड़ी सी दूर हो गई, सो गया। 2-3 बार उस पोखरे के पानी को पिया, उसका मलेरिया खत्म हो गया। कहा वो मरने निकला था कि जंगल में चल के मरेंगे, काशी में चल के मरेंगे, उसका मलेरिया खत्म हो गया। फिर बैक टू पवेलियन गांव चला गया। गांव में उसके लड़के देखे कि पापा फिर कहां से चले आए, हम लोग तो इनका सब दाखिल खारिज म्यूटेशन करा दिए थे, कहां से चले आए। उसने बताया ओल्ड मैन ने कि नॉट दिस, हम बच गए, और एक कोई पोखरा है जिसके पानी को पिए हम बच गए। चारों तरफ हल्ला हो गया। People started to go to that pond. उस पोखरे के पास लोग जाना शुरू किए, उसके पानी को पीना शुरू किए, और अधिकांश लोगों की मलेरिया खत्म होना शुरू हो गई। हल्ला हो गया चारों तरफ कि उस पोखरे में कुछ है जो मलेरिया को खत्म कर दे रहा है। पेरू के राजा के वाइफ को भी मलेरिया हुआ था, उनको भी घोड़ा पर लाद करके उस पोखरे के पास लाया गया। उनका भी जल्दी ही टिकट कटने वाला था, जमराज जी आने वाले थे, उनको उस पोखरे का पानी पिलाया गया, उनका मलेरिया खत्म हो गया। पेरू का राजा 1720 में सोचा कि क्या है उस पोखरे में। उस समय के सारे साइंटिस्ट से कहा कि पूरा ICMR, CSIR, DST, DBT, राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब फंड हम दे देंगे, पता लगाओ उस पोखरे में क्या है जो मलेरिया को खत्म कर दे रहा है। लोगों ने देखा कि देयर वाज ए प्लांट, एक नया पौधा उन लोगों ने देखा। इस पौधे को देखा और इस पौधे के लीचेट्स, पॉलन ग्रेन उस पोखरे में गिर रहे थे जिससे बदबू आ रही थी, और इस पौधे को माना गया कि यही पौधा है जो कि मलेरिया को खत्म कर दे रहा है। और पेरू के राजा के वाइफ का नाम सिनकोना था, इस पौधे का नाम सिनकोना रख दिया गया।
Friends, discovery of first anti-malarial plant is not less than चंद्रमा का खोज, is not less than मंगल का खोज, मंगल ग्रह का खोज. तो दिस इज आवर प्लांट साइंस. ये जो एडवेंचर ऑफ साइंस इनकी जो लोग बात करते हैं, तो हमारे प्लांट साइंस से भी ऐसे तमाम डिस्कवरी हुई है जो कि एडवेंचर से अरे पौधा नहीं रहता तो न्यूटन नहीं बने होते. ये तो पौधा है कि न्यूटन को न्यूटन बना दिया. तो इंपॉर्टेंस है प्लांट साइंस का. है डिस्कवरी ऑफ यूसी रबड़ का खोज जिससे कि हम कल्चर बने, एडवेंचर है. डिस्कवरी ऑफ यूसी एजेट इरेक्टिन फ्रॉम एजेट इरेक्टा इंडिका और बायोडीजल प्लांट फ्रॉम जट्रोफा कर्कस. ऐसे ऐसे पौधों का जो खोज हुआ. तो आज ये स्लोगन है कि इन दी दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है. तो आज ये है कि इन दी कमिंग सिनेरियो, आगे आने वाले समय में, द टावर रिच कंट्रीज अमेरिका एंड जापान will not rule over the world. The biodiversity countries like India will rule on the world. ये स्लोगन है. This is the importance of biodiversity. और क्या था देखिए, अपने कंट्री में स्पाइसेज मिलती हैं. आज these spices are boons for us in this corona period to boost up immunity in our body. एक पौधे के लिए, स्पाइस के लिए देखिए क्या हुआ था कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पाइसेज ऑफ द इंडिया. फर्स्ट पुर्तगाली आए, यहाँ अपना कॉलोनी बनाए स्पाइस के लिए, इंडियन स्पाइस के लिए. उसके बाद हल्ला हुआ, फ्रेंच पीपुल आए, वो अपनी कॉलोनी बनाए. दोनों में लड़ाई हुई. एक पौधे के लिए दो कंट्री लड़ी, पुर्तगाल एंड फ्रेंच. बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर डोमिनेटेड ओवर पुर्तगालीज एंड फ्रेंच और अपने कंट्री में वे रह गए. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन स्पाइसेज. यू सी क्या था बच्चे कि देखो पहले जिम्नोस्पर्म्स पूरे थे, लेकिन क्या हुआ कि ट्रायसिक पीरियड में और क्रिटेशियस पीरियड में हमें पढ़ते हैं डायनासोर खत्म हो गया, जिम्नोस्पर्म्स खत्म हो गए. और हम बताते हैं कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में एक दूसरे तरह के पौधे आए जिसको हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ लेट क्रिटेशियस पीरियड में. हम कहते हैं कि वो उस समय क्या हुआ जो हम अपने हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं प्रलय हुआ. और प्रलय के बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सृजन किया. जब सृजन हुआ, नए तरह के पौधे आए, तो ब्रह्मा जी थाट कि हम किस तरह के पौधों को दें. और इन दी अमंग्स द प्रिमिटिव मेडिसिनल प्लांट्स देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर मेडिसिनल प्लांट्स. तो प्रिमिटिव पौधे आए क्रिटेशियस पीरियड में, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स आए. उसमें से तमाम पौधे हैं जैसे मैग्नोलिया ऑफिसिनालिस, पूनम जी पढ़ाती होगी, मैग्नोलिएसी फैमिली. दिस मैग्नोलिया ऑफिसिनालिस is very much important, medicinally important, मैग्नोलिएसी फैमिली. और उसी फैमिली का इलेशियम, मैग्नोलिएसी फैमिली, तख्ता जान ने उसको वाइंटरेसी फैमिली में रखा है. एंड दैट इज स्टार एनाइस अगेंस्ट एंजाइटी, इंडाइजेशन. और दिस ड्रीमिस वाइंटराई, विंटर में इफिकेसी बार्क की बढ़ जाती है, दैट इज यूज्ड अगेंस्ट इंडाइजेशन. एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट माने घाव को भरना. तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ, उसी समय से हमको मेडिसिनल प्लांट्स, इवन द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, they also contain medicinal plants. For friends, this was my first thrust of my lecture. Why in the era of this modern system of medicine, people are even today running towards the use of medicinal plants. This was. अब ये है कि 80% पॉपुलेशन. आवाज जा रही है ना? ओके, हाँ सर आवाज आ रही है. अच्छा चलो तब ठीक है. If it is so, तो what is you see scenario of our country? अपने कंट्री का क्या सिनेरियो है in the field of this angiosperm? Our country is regarded as there are 17 mega biodiversity rich country, and India is amongst one mega biodiversity rich country. There are 35 hot spots of biodiversity
4 hot spots are found in our country. You see, so we have more than 18,000 angiospermic plants, but 9,000 plants of India, they are of medicinal importance. दूसरा क्या है, पूनम जी आपको पढ़ाई होगी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत लोग इसको पढ़े होंगे. एंड दिस बेंथम एंड हुकर सिस्टम, बेंथम हुकर दो नाम है, जॉर्ज बेंथम, जेडी हुकर. दे बिलोंग टू रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू. लंदन से 4 घंटे की जर्नी है और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू है. वो सोचे कि हम कोई ऐसा क्लासिफिकेशन दें एंजियोस्पर्म का जिसका रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड में हो. तो सोचे इंग्लैंड में हमारे बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने फ्लोरा बीएचयू कैंपस लिखा है, 640 स्पेसीज पाए जाते हैं. पूरे इंग्लैंड में 700 स्पेसीज पाए जाते हैं. हमारे बीएचयू जितने पौधे हैं उतने ही स्पेसीज पूरे इंग्लैंड में हैं. उस पर वो क्या अपना क्लासिफिकेशन देते. पूरे यूरोप में जाते, फ्लोरा यूरोपिया 1300 स्पेसीज है, तब भी उनका काम नहीं चलता. दे थॉट टू गो टू 2 कंट्रीज जो कि जहां की डाइवर्सिटी ज्यादा हो. एंड बेंथम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, बेंथम ऑस्ट्रेलिया गया. एंड हुकर केम टू इंडिया, हुकर जो है वो इंडिया में आया. उस समय अपना देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था. ही विजिटेड आवर कंट्री, ही रोट फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 7 वॉल्यूम में लिखा. क्यों? और इस पर हमारा जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है वो हमारे इंडियन प्लांट्स पर है. ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस है. हुकर क्यों इंडिया आया? पूरे वर्ल्ड में 16 बायोजियोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं, 8 बायोम पाए जाते हैं. और अपने कंट्री को जब आप देखें तो वी हैव हिमालय, एल्पाइन क्लाइमेट, वी हैव डिजर्ट, यू सी, रेगिस्तान, वी हैव लेटराइट सॉइल, नॉर्थ ईस्ट. All the 16 biogeographical zones are found in our country. All the 8 biomes are scattered in our country. Because of this, Hooker came to our country. Hooker अपने country में आया उस समय. This is the importance of biodiversity of our country. और अपने country का biodiversity केवल plant scientist और botanist को ही नहीं attractive किया है. सेल्यूकस हमारे कंट्री में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने आया. ही वाज डिफीटेड इन बिहार. जब वो डिफीट किया तो उसकी सिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य से शादी की. शी वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. और वो लौट करके और ये अपने कंट्री को नहीं गई, वो इंडिया में ही रह गई, हमारे बायोडाइवर्सिटी के तरफ अट्रैक्ट हो करके. मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, कविता इस पर लिखा है. ओहो ग्रीक सी छटा यहीं पर हमने पाई, कैसा सुंदर देश यही सबको सुखदाई है. जैसी सुंदरता यहाँ वैसी ही सुख शांति है, इस दिव्य देश में आप ही पाता मन विश्रांति है. दिस इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड दिस हैज अट्रैक्टेड मेनी साइंटिस्ट. लोग लगा देते हैं ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड और तमाम लैंड, बट सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है, विच इज फार फार बेटर देन ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड. उनके बायोडाइवर्सिटी से फार फार बेटर है. एंड टोटल ग्लोबल हर्बल मार्केट में जो डिमांडेड 7 रॉ मटेरियल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, amongst these 9 medicinal plants raw materials are luxuriantly found in our country. Garlic जितना चाहे अपने कंट्री में लगा लो, एलोवेरा जितना चाहे लगा लो. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. और 44% प्लांट्स ऑफ इंडिया दे आर ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी. क्या है, कैसे कैसे पौधे हैं. निग्लेक्टेड प्लांट्स कुछ अपने कंट्री में हैं जिसको कि हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि अपने कंट्री में नॉर्थ ईस्ट रीजन में काला चावल पाया जाता है, काला जोहा राइस कहते हैं हम उसको, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है. और चाइना में पाया जाता था लेकिन उसको केवल बड़े लोग खाते थे, ये अपने कंट्री में पाया जाता है. और इसमें खुशबू जो होती है बासमती राइस जैसे होती है, बिकॉज इट कंटेन एस्टिल 1 पाइरोन.
2 एस्टिल1 पाइरोन्थ, बासमती राइस जैसे इसमें खुशबू होती है। बट इन एडिशन टू दिस इट कंटेन्स omega-3 फैटी एसिड, omega-6 फैटी एसिड, ये इसमें पाया जाता है। अभी हम केवल आपको omega-3 फैटी एसिड की बात किए थे। हमारे हार्ट के फंक्शन में omega-6 एंड omega-3 फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंस है, और एक स्पेसिफिक रेशियो में चाहिए 6:1। This 6:1 ratio of omega-6 and omega-3 fatty acid is found only in our काला जोहा राइस जो इंडिया में पाया जाता है। You see, इस तरह का हमारा neglected plant है, राइस है, and it is, you see, so medicinally important. Such type of plants are found in our country. और इसमें इतनी खुशबू आती है कि असमीज रामायण में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में रावण को जब कुंभकर्ण को जगाना होता था, इमरजेंसी में, तो कुंभकर्ण को खाना बहुत अच्छा लगता था, खुशबू वाला खाना खाता था, तो उसको काला जोहा राइस का ही खाना खिलाया जाता था कि आसानी से वो जग जाए। तो दिस इज, यू सी, such type of plants are found in our country, and from our country Charak Samhita, Sushrut Samhita, these, you see, Ayurvedic literature were documented. Or another important Ayurvedic formulation that is known as Chavanprash, जिसको हम कहते हैं, which is ingredient of 42 medicinal plant components. This Chavanprash, और this, you see, एक component based formulation बनाना बहुत आसान है। 42 component based formulation Chavanprash, which is highly antioxidant in nature, और 10 मूलारिष्ट, 10 पौधों के रूट से 10 मूलारिष्ट। इस तरह के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, नॉन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस अपने कंट्री से बने हैं। अपने कंट्री में मेडिसिनल प्लांट का ये इंपॉर्टेंस है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला क्यों त्रिपुरा की राजधानी है, दूसरा नाम उसको पड़ जाता, बिकॉज इन द त्रिपुरा देयर इज ए प्लांट जिससे हम अगरबत्ती बनाते हैं, वो अगर प्लांट आज इंडेमिक टू त्रिपुरा, त्रिपुरा में वो अगर प्लांट पाए जाते हैं। इसी से उसी अगर प्लांट का एक्वेलिया मैलेसियंसिस, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये हमारे पौधे के बेस्ट राजधानी अगरतला है। या देयर आर सम स्पॉट्स इन आवर कंट्री लाइक नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल क्यों नाम पड़ा कि देयर इज ए प्लांट जो 12 साल बाद खिलता है और पूरा का पूरा पहाड़ नीला दिखाई देता है, स्ट्रोबेलेंथस कुंथियेंसिस, दिस प्लांट इन नीलगिरी हिल, and based on this plant there is a important spot in our country, Nilgiri hill, or there is Yellowmela, Cardamom hills. So this is the importance of plants in our country. आज हम पौधों के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। जब जब पैंडेमिक आता है, नई बीमारी आती है, उसकी कोई दवा नहीं होती है, तो पौधों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये जो पौधा है गिलोय, गुरुच इसको हम कहते हैं, बॉटनिकल नेम स्टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, हार्ट शेप्ड लीफ होती है, कार्डियक लीफ होती है, हार्ट के बीमारी में बहुत यूजफुल है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है सिमिलर क्योर्स टू सिमिलर। जिस पौधे का कोई अंग पार्ट जो है हमारे बॉडी के किसी पार्ट से मिलता है तो उसके अगेंस्ट वो इफिकेशियस होता है। एंड दिस इज, आयुर्वेद में 2 तरह के रसायन इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज बल्यवर्धक रसायन जो शरीर में ताकत दे दे, एंड अनदर वन इज इंटेलेक्ट प्रमोटिंग रसायन, मध्य रसायन जिसको हम कहते हैं स्टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया इज एनर्जी बूस्टर, इसको हम बल्य रसायन कहते हैं, एफ्रोडिसिक प्लांट कहते हैं। और आज इसका पैंडेमिक के समय, कोविड-19 के समय इंपॉर्टेंस बढ़ा है या इन बूस्टिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। और इस पौधे को देखो, हम कहते हैं बच्चे अपने कंट्री में चारों तरफ उगता है। दिस इज आल्सो नोन एज अमृता, इसको अमृता कहते हैं। क्यों अमृता कहते हैं? ये हमारे कंट्री में हमारे बीएचयू से ही लिखा गया है, भाव प्रकाश निघंटू है। और इस भाव प्रकाश निघंटू में लिखा गया है, संस्कृत में है कि बच्चों, जब राम रावण की लड़ाई हुई, दशहरे के दिन जब रावण मारा गया, लड़ाई बड़ी कड़ी थी और देवता लोग पहाड़ पर, हिमालय पर बैठ करके कंप्यूटर में लड़ाई देख रहे थे, सामने आ करके जैसे क्रिकेट मैच हम लोग फील्ड में देखते हैं वो नहीं देख रहे थे लोग।
क्योंकि रावण कई बार उन देवता लोगों को डिफीट किया हुआ था, डरे हुए लोग थे, छिप करके लड़ाई देख रहे थे। लेकिन विजयादशमी के दिन जब रावण मारा गया, गिरा धरती पर, तो देवता, दोज गॉड्स केम ऑन द अर्थ, वो कोलंबो लंका आए और रामचंद्र जी से कहे गॉड लेंटिंग कांग्रेचुलेशंस, आपने धरती के भार को हरण कर लिया। रामचंद्र, यू आर मर्यादा पुरुषोत्तम। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ भाई, मैं क्या कोई कहेगा कि लक्ष्मण 4 घंटा सोया था तो मैं रोते रोते आंसू हमारे निकले और संजीवनी बूटी हमको पहाड़ से मंगानी पड़ी हनुमान को भेज करके। और ये जो बंदर हमारे तरफ से मरे हुए हैं, भालू मरे हुए हैं, ये मर गए तो इनकी सिस्टर रक्षाबंधन कैसे मनाएंगी, इनकी वाइफ्स करवा चौथ कैसे रहेगी, तीज व्रत कैसे रहेंगी, हम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो जाएंगे। इसलिए वो रिक्वेस्ट किए इंद्र से कि ऐ इंद्र, हमारे पार्टी के बानर भालुओं को जिंदा कर दो। राम ने इंद्र से कहा कि हमारे पार्टी के बानर भालुओं को जिंदा कर दो। ऊपर गए इंद्र, अमृत की बरसात किए और वो सारे बानर भालू जो मरे थे वो जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद वो अपना बर्थडे मनाने लगे, और जब बर्थडे मनाने लगे तुम सबों के शरीर से जहां अमृत गिरा, अमृता पैदा हो गया, तीनों इस पूरा कार्डिफोलिया पैदा हो गया, ये अमृता है। रामचरितमानस अगर आप पढ़े होंगे तो उसके उत्तर कांड में लिखा हुआ है कि सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चर ही जे मारे, मम हित लाग तजे निज प्राणा, तियहि जी आउ सुरेश सुदाना, सुधा बरस कपि भाल जिलाए, सुखी भय प्रभु पुन पाए। ये तीनों इस पूरा कार्डिफोलिया। और अपने कंट्री में देखिए हैदराबाद में पौधा पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं कैरूलुमा एस्क्लेपिडेसी का ये पौधा है। हैदराबाद के लोग इसकी चटनी बना करके खाते हैं। हैदराबाद के लोग हम लोगों जैसे मोटे तगड़े नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं। क्यों होते हैं? इसकी चटनी खाते हैं। और इसमें ये पता चला कि ये जो है ये जो मोटापा है उसको कम कर देता है। इस कैरूलुमा का फार्मूलेशन बनाया गया रिडक्टा, और रिडक्टा खाने का पहले मैडम ऐसी हेल्दी थी, मोटी तगड़ी थी, जब रिडक्टा खाई तो दुबली पतली हो गई। तो such type of plants are found in our country which are known as feminine food in India, fat burner, फैट ब्लास्टर, वेट लॉस इससे कम होता है। ऐसे पौधे अपने कंट्री में पाए जाते हैं। और देयर आर मेनी प्लांट्स विच मैनेज डायबिटिक ब्लड शुगर को अपने कंट्री में मैनेज करते हैं। और दिस इज एलोवेरा, सब जानते हैं, सब जगह है, और कितना इसका ह्यूज इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया है सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। So many medicinal plants are found in our country. और दिस राउल्फिया सर्पेंटाइना बीएससी में लड़के पढ़ते हैं। The roots of राउल्फिया सर्पेंटाइना आर में जितनी मोटी रूट होगी उतना ही मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही अल्कलॉइड ज्यादा पाया जाएगा। ये इसकी थियरी है। और ये राउल्फिया सर्पेंटाइना एक पौधे के रूप में मोर देन 22 अल्कलॉइड्स आर फाउंड। और एक स्टोरी इसमें है, 1942 में गांधी जी जब आमरण अनशन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू किए थे कि आमरण अनशन की जब तक अंग्रेज चले नहीं जाएंगे मैं अपना अनशन कंटिन्यू करूंगा। गांधी जी को जबरदस्ती ले जाकर के जेल में अंग्रेज डाल दिए कि इनका जो हंगर स्ट्राइक है वो खत्म हो जाएगा। बट गांधी जी वाज ए मैन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। वो बकरी का दूध पीते थे। बकरी का दूध इज मोर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट देन काऊ का दूध, बिकॉज गाय हमारा मीठी घास को खाती है, बकरी जो है वो बिटर घास को खाती है। तो बकरी का दूध, गोट मिल्क इज मोर मेडिसिनली देन दिस काऊ मिल्क। गांधी जी इस पौधे के इंपॉर्टेंस को जानते थे और वो अपने धोती में इस पौधे के पाउडर को बांध करके जेल में लेके चले गए। और जब सवेरे दातुन करते थे, ब्रश करते थे, तो उसी समय इस पौधे के पाउडर को पी जाते थे। क्या था? गांधी जी से कौन मिलने आया, कौन गया, कुछ उनको पता नहीं चला। और ही कंटिन्यूड हिज हंगर स्ट्राइड इसी पौधे के कारण। दिस पौधा, इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, सच प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांकुलाइजर। ट्रांकुलाइजर, जैसे कि अर्जुन ने विराट युद्ध में बाण छोड़ा था और जितने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थे किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, आत्ममुग्ध हो गए थे।
वही ये पौधा है। ट्रांकुलाइजर लाइक एक्टिविटी इन राउटिया सर्पेंटाइना, ऐसे पौधे आर्विधैनिया सोमनीफेरा, बल्य रसायन, द रूट्स आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में ताकत देती हैं। सच टाइप ऑफ प्लांट्स, सराका अशोक, सराका गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जितनी है, दो पौधे इंपॉर्टेंट है। वन इज सराका अशोक एंड अनदर वन इज धातकी उडफोर्डिया, दो है। ये सराका अशोक का, सराका सारा वाज द वाइफ ऑफ लीनियस, लीनियस के वाइफ का नाम सारा था और इसी के कारण उसने इस पौधे का नाम सराका रखा। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, लीनियस की वाइफ बहुत सुंदर थी और ये जो पौधा खिलता है तो बड़ा सुंदर लगता है, तो बेस्ड ऑन दिस इस पौधे का नाम लीनियस सराका रखा। और ये सराका अशोक जो है अपने साउथ इंडिया में खूब पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। एंड दिस इज द प्लांट, द बार्क इज मेडिसिनली इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और देयर आर सो मेनी प्लांट, समय कम है। दिस प्लांट अल्मोड़ा में पाया जाता है, जो हमको पथरी होती है ऑपरेशन कराते हैं, वो तो खैर रेमेडी है ही है, छोटे छोटे पथरी को निकाल देता है। पाषाण भेदी, वर्जीनिया, इलाइट कीमोटाइप इज फाउंड इन अल्मोड़ा। तो such type of plants are found in our country. So many you see cosmetic plants. अपने कंट्री में कॉस्मेटिक का नॉलेज है कि पांडव की जो वाइफ थी द्रौपदी, वो सैरेंद्री बनी और विराट के वाइफ को देखिए तो उनका वो कॉस्मेटिक का काम करती थी। इट मींस कि अपने कंट्री में कॉस्मेटिक का नॉलेज बहुत पहले से था है। और सो मेनी कॉस्मेटिक प्लांट्स वेर फाउंड इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में लिखा है देयर वाज वन रावण राज्य है, रावण राज्य एक था है। रावण जो है वो सारे ग्रहों को अपने बस में कर लिया था और उस धरती की सस्टेनेबिलिटी खत्म हो गई थी है। उस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए राम आए, रावण का वध किए और धरती की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हुई एंड देयर वाज राम राज्य। राम राज्य में क्या था? अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरत शरीरा। उस समय अल्प मृत्यु नहीं होती थी कि बाप के सामने बेटा मर जाए है, लोग बहुत दिन तक रहते थे। वो कोई आइबुजेसिक प्लस नहीं था कि हमारा थकान दूर हो जाए, ऐसे ऐसे पौधे थे कि हमारे थकान दूर हो जाते थे। और सब लोग बहुत सुंदर दिखाई देते थे, बलवान थे। एफ्रोडिसिक प्लांट्स वेयर फाउंड, विधेनिया सोमनीफेरा लाइक प्लांट्स वेयर फाउंड इन रामराज्य। और सब लोग सुंदर थे, सुंदर मींस एलोवेरा। तो हम ये कहते हैं कि राम राज्य को राम राज्य बनाने में देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरद शरीरा। टाइम कम है। क्यों इंडिया की इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है? फ्रेंड्स, पहले क्या था कि पूरा जो ग्लोब था दो जगह यूनाइटेड था। वन इज गोंडवाना कनेक्शन, अनदर वन इज लॉरेशिया कनेक्शन। ये है हमारा पैलियो बताता है, दो तरफ यूनाइटेड था। बाद में कॉन्टिनेंट्स टूटे और जो कॉन्टिनेंट्स बने गोंडवाना से, दे आर बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज। जो लॉरेशिया कनेक्शन थे एक्सेप्ट फॉर चाइना, वो क्या थे? दे आर नॉट बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री। ये अपने देखिए साउथ अमेरिका अफ्रीका को जब चाहे तब आप जोड़ सकते हैं। गोंडवाना कनेक्शन अपने कंट्री का ओरिजिन मेडागास्कर से हुआ। मेडागास्कर से इंडिया पहले ऐसे था, देखिए कैसे अपने कंट्री का मेडागास्कर से हुआ। मेडागास्कर इज गोंडवाना कनेक्शन। अपने यहाँ गोंडवाना एक्सप्रेस, अपने यहाँ गोंड ट्राइब। तो दिस गोंडवाना कनेक्शन, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, they are Gondwana connection, and this Gondwana connection makes India a biodiversity rich country. ये गोंडवाना कनेक्शन के कारण हम बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री हैं। और ये जो दो पौधे हैं, ये दोनों पौधे इंडिया में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, जो कि हमको कोरिलेट करता है इसी दोनों जगहों पर कि वी आर गोंडवाना कनेक्शन। तो दिस गोंडवाना कनेक्शन मेक्स इंडिया ए बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री। ये है इंपॉर्टेंस अपने बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन फ्रेंड्स, हमने ये बताया कि हुकर केम टू आवर कंट्री, ही रोट फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन उसी फ्लोरा के इंट्रोडक्शन में उसने लिखा है ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन फ्लोरा इज द कन्फ्लुएंस, माने संगम ऑफ फ्लोराज ऑफ सराउंडिंग कंट्री। वो ये लिख दिया है
कि इंडिया का कोई अपना निजी फ्लोरा नहीं है। यहाँ के जो पौधे हैं कुछ मलेशिया से आए हैं, यूरोप से आए हैं, जापान से आए हैं, बुद्धिज्म के कारण यहाँ पौधे आ गए हैं। इंडिया का कोई अपना पर्सनल फ्लोरा नहीं, ये लिख दिया है। लेकिन बात इससे देखो क्या जाती है कि आज बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए आप रिकलेक्ट करिए 1992 में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, और उसमें ये कहा गया कि द स्टेट्स विल हैव सोवरेन राइट ऑन बायोडाइवर्सिटी, हर कंट्री का अपने बायोडाइवर्सिटी पर सार्वभौमिक अधिकार होगा। ये है, क्योंकि क्या कुछ होता था अभी हम बताएंगे। हमारे कंट्री और चाइना में बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है। चाइना से केवल हमारा लद्दाख वाला टेरिटरी का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज पामीर बेल्ट, और इस पामीर बेल्ट से सब पहाड़ निकले हुए हैं। दीज आर चाइनीज माउंटेन, दिस इज हिमालय, हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन, चाइनीज माउंटेन्स आर ओल्डर देन हिमालय। चाइना ये कहता है कि हिमालय पर पेड़ पौधे कहां से चले गए, वो तो सब हमारे पहाड़ से इंडिया में पेड़ पौधे हिमालय पर चले गए, तो अपना अधिकार इस पर दिखा। देयर इज अ प्रॉब्लम, biodiversity problem in between China and India also, but luckily our plants, most of the dicards, 75% Indian dicards, they are polyploids, and Chinese dicards they are diploid। ये हमको प्रोटेक्ट करता है कि हो सकता है चाइना से ही पौधे आए हों, लेकिन हिमालय को जब क्रॉस किए हों तो स्पेसिएशन, हिमालय के क्लाइमेट के कारण स्पेसिएशन हुआ हो, और इंडियन प्लांट्स आर डिफरेंट देन चाइना। ये है जिस प्रोटेक्ट हमने बताया कि क्यों बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। कि देखिए ये एक पौधा है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कैथेरेंथस रोजियस, विंका रोजिया, सदाबहार। ये पौधा हम ग्रो करते हैं। क्या है इस पौधे का कि दिस इज द नेटिव ऑफ मेडागास्कर, ये पौधा मेडागास्कर में पाया जाता है, लेकिन इल्ली लिल्ली फॉर्म मेडागास्कर गई और इस पौधे के इथनो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को देखी, इस पौधे के रूट को ले गई और क्या की कि इसकी पूरी फाइटोकेमिस्ट्री की, और टू इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स vinblastine and vincristine, minor components of these plants, इसको एंटी कैंसरस प्लांट्स दे वे डिस्कवर्ड। पौधा मेडागास्कर का, इल्ली ने इसके एंटी कैंसरस कंपाउंड को बनाया, पेटेंट करा लिया है पौधा मेडागास्कर का, और उस पर पेटेंट के कारण अधिकार हो गया इल्ली कंपनी का। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, ये चीज हुआ। पेड़ पौधा मेडागास्कर का अधिकार उनका हो गया, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला जो हम आज कहते हैं। एंड इन बॉटनी दिस इज नोन एज बायोपाइरेसी, दिस इज नोन एज जेनेटिक डकैती, जीन रॉबिंग की। एक पौधे के द बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज illegally they exploit the important biodiversity of biodiversity rich country but biotechnologically poor country। जो बायोटेक्नोलॉजिकली रिच कंट्री है, गरीब कंट्री के बायोडाइवर्सिटी को इलीगल एक्सप्लॉइट करती हैं, और इसको हम कहते हैं बायोपाइरेसी। ये पौधा अफ्रीका का है, 5000 टाइम मोर स्वीटनर देन शुगर, और इसके शुगर के कंपोनेंट को, जीन को पेटेंट करा लिया गया। और ये जो पौधा है एपेटाइट सप्रेसर प्लांट, कलिहारी डिजर्ट इन साउथ अफ्रीका। तो ये सब चीजें हैं। देयर आर सो मेनी केसेज ऑफ बायोपाइरेसी। अपने यहाँ जो जामुन मिलता है उसके पूरे जीन सीक्वेंसिंग को चाइना ने करा लिया है। तो there are so many cases of biopiracy, and this biopiracy is a huge issue. And India is a country, biodiversity rich country. We have huge knowledge of traditional knowledge of undocumented knowledge of medicinal plant, and there are many reports कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को ये जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज हैं इलीगली दे गॉट पेटेंटेड। ये चीजें हैं जिसको कि हमको रोकना होगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बॉटलनेक फॉर अस। ये बायोपाइरेसी को कैसे रोका जाए? तो वी हैव टू document our scientifically document our traditional knowledge which we call as bioprospection। हमको अपने मेडिसिनल प्लांट को बायोप्रोस्पेक्ट करना होगा। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दे शुड बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड, इंपॉर्टेंट जीन्स दे शुड बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड। और ये डॉक्यूमेंटेशन केवल हम मेडिसिनल प्लांट का ही नहीं कर सकते हैं,
देयर में बी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। ये एक पौधा है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, दिस इज नोन एज सैप्रिया हिमालयाना। और ये जो बदबू करता है, लार्जेस्ट फ्लावर रूट पैरासाइट है सैप्रिया हिमालयाना, और जब ये खिलता है तो बदबू करता है, इतना तेज बदबू करता है कि 6-7 किलोमीटर तक आदमी का आना जाना बंद हो जाता है। तो आज जो है जीन शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी पता चल गई है, तो क्या करना होगा कि इसके बदबू वाले जीन को निकाल करके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितने पौधे हैं इसके बदबू वाले जीन को ट्रांसमिट कर दो, जिससे कि कसाब टाइप आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते हैं उनको रोक दिया जाए। वी मे डॉक्यूमेंट बायो प्रॉस्पेक्ट और बायोडाइवर्सिटी, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर विद अस। किसी तरह से हम कर सकते हैं, ऐसा हमने किया है कि असम में जो मिर्चा पाया जाता है उसको हम लोगों ने यूज किया था भुज जलोकिया को, है कश्मीर में, है आतंकवादियों को हटाने के लिए। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। CSIR has developed traditional knowledge digital library on February 9, 2009। ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है CSIR ने डेवलप किया है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है 5 लैंग्वेजेस में। एंड दिस डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है टू चेक दी बायोपायरेसी। अब हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे पूनम जी, 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे। नहीं सर, बहुत अच्छा है, आप जितना चाहे बोल सकते हैं। नहीं हमारा समय जो दी हो ना, भागे के लोग भी तो होंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो 10 मिनट में ठीक है सर, बिल्कुल। तो देखो बच्चों, आज आया है नैनो टेक्नोलॉजी, सब लोग नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन अपने कंट्री में तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से था। छोटे थे हम लोग, आंख में सुरमा लगाते थे। दिस सुरमा इज कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी। 400 साल पहले वर्णन है रामचरितमानस में, तुलसीदास ने लिखा है, जथा सुअंजल अंजद्रिग साधक सिद्ध सुजान महिमा देखत शैल बन भूषण भूर निदान। हमारे ऐसे ऋषि महात्मा थे कि सुरमा लगा करके और पहाड़ के नीचे क्या है ये देख लेते थे। तो यू सी दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। कमल के पत्ते पर कीचड़ नहीं लगता है, क्योंकि कमल के पत्ते पर लोटस नैनो पार्टिकल पाया जाता है, सेल्फ रिमूविंग, मड को रिमूव करता है। ये है प्लांट्स में सो मेनी नैनो पार्टिकल्स आर फाउंड, और इसको हम सो मेनी डिवाइसेज वी हैव डेवलप्ड। और कुंभ मेला लगेगा, धुई रमाना, जाड़े में हम सूट पहन करके कुंभ मेले में जाएंगे। साधु महात्मा लोग धुई रमाते हैं, कोल्ड के अगेंस्ट स्ट्रेस देता है उनको, है तो दिस इज यू सी नैनो पार्टिकल है। तो सो मेनी घर में जब रोटी बनती थी मिठास ज्यादा होता था, तो ये सब चीजें हैं। लड़ाई में तानाजी यू सी घोरपाट का यूज किए थे औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के पैर में, अरे घोरपाट के पैर में, लीजर्ड में नैनो पार्टिकल पाया जाता है और किले को मुक्त कराए। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का नॉलेज अपने कंट्री में बहुत पहले से था। तो करना यह है कि आयुर्वेद में जो हमारे फॉर्मुलेशंस हैं, वी हैव टू मेक them more efficacious through such type of scientific knowledge। और हमको ये करना है कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, पहले कोई बोल रहे थे हमारे लेक्चर के पहले, बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड सो मेनी रीजन्स आर देयर। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस को क्या है अपने कंट्री में, इन्वायरमेंटल इथिक्स खत्म होता चला जा रहा है। पहले हम ये मानते थे किसी पौधे को किसी देवता से कोरिलेट करते थे, लेकिन ये चीज खत्म होता चला जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आवर बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट। देखिए वो जो हम नवरात्र मनाते हैं, 9 दुर्गा को कोरिलेट किया गया है 9 प्लांट से, तो ये इथिक्स जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो दिस वी हैव टू रिवाइव, इन्वायरमेंटल इथिक्स वी हैव टू रिवाइव। और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज दैट इज अफेक्टिंग आवर मेडिसिनल प्लांट बायोडाइवर्सिटी। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में एक स्पेसिफिक डोज दिया हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज से, टेम्परेचर बढ़ने से या तो एक्टिव प्रिंसिपल बढ़ता होगा या घटता होगा, रिसर्च की बात है। अगर बढ़ा तब भी आयुर्वेद में जो डोज दिया हुआ है वो अल्टर करेगा।
एक्टिव प्रिंसिपल घटा तभी वो डोज अल्टर करेगा। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व नेक्स्ट रिसर्च इज कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ आवर प्लांट, दिस वी हैव टू ऑब्जर्व। और ये क्लाइमेट चेंज के कारण पौधों की फ्लावरिंग पीरियड बदलता चला जा रहा है। जो पौधे जून में खिलते थे मार्च में खिल जा रहे हैं। तो अगेन वी हैव टू डॉक्यूमेंट दीज प्लांट्स, लोकल फ्लोरा फिर से लिखने की जरूरत है। और हिमालय पर जहां पार्थिनियम नहीं मिलता था टेम्परेचर बढ़ने से, वो पार्थिनियम नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड इन higher altitude of Himalaya, and this parthenium you see is dangerous for our medicinal plant biodiversity at Himalaya. So this climate change is affecting our medicinal plant biodiversity. We have to protect, create awareness in our students. और हम लोगों को जो है 18 साल की लड़की है ग्रेटा, इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये ग्रेटा जो है जा करके जो लेक्चर दी थी ट्रंप के सामने और मोदी के सामने, वी शुड क्रिएट अवेयरनेस कि ये कैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में अपना लेक्चर दी थी। नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं है। तो वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस इन आवर स्टूडेंट्स अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बताया कि ये जो हमारे जो थे रामावतार वगैरह पहले हमने बता दिया, फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ इनका अवतार हुआ था, ये चीज हमने बता दिया। तो दिस इज कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हमको बचाना है। एंड देयर आर सो, अब देखिए लास्ट है, पेड़ पौधे के इंपॉर्टेंस को हम कब समझते हैं? आज कोरोना में समझ रहे हैं कि कौन स्पाइस खाएं, तेज पत्ता खाएं और गिलोय खाएं। जब डेंगू आया था, डेंगू की कोई दवा नहीं, प्लेटलेट्स कम हो रही थी, सब जानते हैं। पपीते का हम लोग एक्सट्रैक्ट लेकर के पीते थे। इवन जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो भी पपीते को प्रेस्क्राइब करते थे, कैरिपिल लाइक यूसी टेबलेट्स, इनको लोग प्रेस्क्राइब करते थे। तो जब जब पेंडेमिक आता है यूसी, पेड़ पौधों के इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब लास्ट जो हमारा थीम था, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। फ्रेंड्स, नारा क्या था? थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। पैड्रिक ने दिया था कि दूसरे कंट्री में जाकर के उनके कल्चर को देखना चाहिए और हमको वो अपनाना चाहिए कि हम एडवांस हों। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि we have huge knowledge of ethno-medicinal plants. So many medicinal plants are with us. और आज जो इंडिया की जीडीपी नीचे जा रही है, माइनस में जा रही है, अगर हम अपने इथनो मेडिसिनल नॉलेज से, देखिए संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए, संजीवनी बूटी टाइप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोई हर्बल फार्मुलेशन हम बना दें जिसका कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन हो, 2-3 हम बना दें, हमारा जीडीपी ऊपर हो जाएगा। तो नाउ क्या है जो मोदी जी किए थे, वी शुड बी वोकल फॉर आवर लोकल मेडिसिनल प्लांट, लोकल इथनो मेडिसिनल नॉलेज। इसका इंपॉर्टेंस है कि जो इथनो मेडिसिनल प्लांट है, कोटा में जो इथनो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उस पर हमको काम करना चाहिए। एंड वी शुड फार्मुलेट सच टाइप ऑफ फार्मुलेशंस which are very much effective and global importance that will be for the country, बायो इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है सच ए ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज विद अस एंड वी शुड यू सी ट्राई टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच। क्या है कि जदा जदा ही धर्म से अगला निर्भवति भारत, अब युत्थानम धर्म से तदात्मनम सृजाम्यहम्। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, जब जब बदमाश आते हैं, आतताई आते हैं, तो हम अपना जन्म लेते हैं, रूप लेते हैं और उन आतताइयों को हम खत्म कर देते हैं। तो ऊपर से धन्वंतरी कह रहे हैं पेड़ पौधों के डॉक्टर कि अरे पृथ्वी वासियों, अरे कोटा वासियों, घबराना मत। जब जब नई नई बीमारियां आएंगी, पेंडेमिक आएगा, तो हमारे प्लांट बायोडाइवर्सिटी की तरफ देखना। हमने ऐसे ऐसे पेड़ पौधों को दिया है कि उन सारी नई नई बीमारियों को दूर करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल
to the organizers, my student Poonam Jaiswal, for giving me opportunity to deliver a talk through this webinar. Thank you very much. Thank you very much, sir. Even we are thankful. लेक्चर है एमएससी का. Sir, it's really, मैं तो कह सकती हूँ कि आप द्रोणाचार्य हैं बॉटनी के. एंड दो बातें हमने आपके इस लेक्चर में देखी कि किस मनोरंजक और रोचक तरीके से आपने सारा अपना उद्बोधन दिया और प्रेजेंटेशन दिखाया. बहुत सारी जानकारियां हमारे नेचुरल वे में आपने रिप्रेजेंट की. तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच. और आपकी कुछ चीजें जो आपने मेंशन की हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को जरूर इस बात के लिए मोटिवेट करेंगी. एंड डेफिनेटली दे विल स्टार्ट थिंकिंग लोकली एंड एक्टिंग ग्लोबली एंड वाइस वर्सा. थैंक यू वेरी मच सर. हमारा क्लास है एमएससी का. हाँ सर, थैंक यू सो मच सर. हमको अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच सर. हमें भी बहुत अच्छा लगा. चलो अच्छा है, अच्छा करो. हाँ सर, कोई शब्द ही नहीं है आपके उद्बोधन के लिए. आपने इतना अच्छे तरीके से एक एक चीज उसके इतिहास के साथ बताई है. हमारे सारे छात्रों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा. अच्छा ठीक है, कभी अब कोरोना खत्म होगा तो हम आपके यहाँ कोटा में आएंगे, लेक्चर पब्लिकली देंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम. कभी आ जाएंगे. थैंक यू. आप लोगों ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच. बंद करो माइक. एग्जिट तो करें, एग्जिट करें. इसको हटा दो. ये मोबाइल किसका है? अच्छा अच्छा, तो खत्म करो हमारा मोबाइल. हाँ, कौन होना है था? किसी त्रिवेदी सर. अच्छा, क्यों? हेलो. हाँ, हम कर ले रहे हैं. हाँ, सोमनाथ बात किया था, बोले कि एक मिनट. चलो चलो. हाँ बिल्कुल. Good afternoon, one and all. This is an honor to me that I have been asked to welcome Dr. Padmanabh Dwivedi sir on behalf of Principal, GDB College and Department of Botany. Sir, it's our pleasure to have you amongst us. Let me introduce to you. Dr. Padmanabh sir is a prominent researcher and he is presently working as Professor, Department of Plant Physiology, Institute of Agricultural Sciences, BHU, Varanasi. He has done his doctorate from University Cambridge and he has a vast teaching experience of 21 years and 26 years of research experience. To his credit, he has around 90 research papers published under various national and international journals. Such a good work you have done during these years, sir. Several books have been published which having recognition nationally and internationally. Currently, 8 students doing their work under his guidance and 10 students have been awarded PhD. Sir, you have done several research projects funded by CST, UGC, DBT, DST, and you also served as Vice President of Indian Society for Plant Physiology for the year 2013. Sir has organized various seminars, conferences, nationally, internationally. And this is a matter of pride that he is our next speaker and his deliberation on micropropagation and biodiversity conservation with special reference to medicinal plants and orchids would definitely benefit all of us. Welcome, Dr. Padmanabh Dwivedi, sir.
Over to you now, sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much. I am really very much thankful to Dr. Poonam Jaiswal, who has been our classmate long back during PG. And also I'm thankful to the organizing committee of GDB Common Girls College for giving me this opportunity. Um, share. So today I shall be talking on micropropagation and biodiversity conservation with reference to medicine plants. Basically, we already know a lot of things today. Just we heard about from the lecture of Professor N.K. Dubey sir. He touched upon various facets of biodiversity, and today I will be focusing more on how to conserve this biodiversity, rich biodiversity that our country has, with special reference to medicine plants that we have done in our lab, and also the orchids, which are very important, particularly in the northeastern part of our country. So we already know that biological diversity is total variability within the living organisms and the ecological complexes they inhabit. It is obvious that it refers to a study of the distribution of natural habitats of plants, animals, and microbes, and their climatic conditions. Now we know that biodiversity mostly encompasses or includes diversity of form right from molecular to individuals, organisms, populations, communities, ecosystems, landscapes, and biospheres as well. Now, the United Nations Conventions on Biological Diversity, what we call as CBD, it defines biodiversity as the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and also the ecological complexes of which they are part. So in the year 1992, in the United Nations Conference on Environment and Development, it was discussed at three levels: ecosystem level, species level, and genetic diversity level, and all reflected in the number of different species, the different combination of species, and the different combinations within the genes. About 5 to 30 million species are estimated to be existing, and many of them have millions of genetically distinct individuals. So we will be talking more about the biodiversity in the later slides, and also with reference to medicine plants. So regarding bioresources, the biodiversity, which generally it is enormous, and it encompasses, it requires management on scientific lines. We know that the importance of biodiversity, bioresources, what we have today. Not only it serves as an important natural resource, the bioresources are they provide human beings food, medicines, and clothing, but also mental and spiritual welfare. Around more than 3,000 plant species are regarded as source of food. They're also a source of genetic resources, as wild plants are important genetic resources and used in crop breeding programs. Almost 25,000 plants with medicinal uses are listed by WHO, out of which only about around 5,000 species have been tested for potential source of nutrients. Plant-based medicines are the mainstay of about 75 to 80% of the world populations, and mainly in the developing countries due to its lesser side effects, including our country. And they also have a lot of potentials in R&D and pharmaceutical industries. So their identification, conservation, and characterization all become very important and crucial, owing to their a lot of commercial, ecological,
and sociological importance in our day-to-day life. So as I said, that it is defined as variability among living organisms for all the sources, including terrestrial and other aquatic ecosystems and ecological complexes of which they are part. This encompasses natural ecosystems, wild species and varieties, agricultural ecosystems, domesticated species, and varieties. So regarding some, the facts and figures, we have mostly around 10 million species of, this biodiversity, out of which 1.4 million species are unrecorded. So we can know that how much we are still, underestimating the number of plants and species. 4 to 40 million species are unknown and unmonitored altogether. And India, it is a 5 to 6% of total global diversity is covered by India, and it is one of the 12 mega diversity countries of the world. Now it's 17 out of 17. We are one of the mega diversities of the country, and the northeastern regions, Western Ghats, northwestern, eastern Himalayas, and Andaman and Nicobar Islands, and owing to various, hubs of the biodiversity. पद्मनाभ सर, आपकी आवाज बहुत थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज करें आप माइक. अच्छा, 1 मिनट. Okay, is it okay now? Is it okay? हाँ, ठीक है. Okay, so major causes of loss of biodiversity, biological diversity is the destruction of natural ecosystems. Mostly the loss of natural habitat is the greatest threat to the survival of wild species. And if we talk about this, habitat destruction and fragmentation are mostly considered as the responsible factors for the species extinction. Now, this habitat fragmentation, if you talk about it, increases the extinction rate by reducing population size, enhancing the stochastic processes and genetic bottlenecks, and eliminating keystone predators, and also favoring edge effect. Urbanization and human activity, what we call as anthropogenic activities like clearing of land for agriculture, mining and industries, highway construction, dam building, etc., destroy the natural habitat of most of the animals and plants. And we know that marine organisms like coral reefs have all suffered due to pollution, mostly the water and aquatic pollution. The tropical rainforests, which are mainstay of diverse, a variety of biological diversity, are being destroyed at more rapid pace. And for instance, in Australia and New Zealand, we talk about, and also in California, about 90% of wetland systems have been lost. So as the natural habitats are declining, so does their ability to provide ecosystem services like purifying water, enriching soil, protecting watersheds. All these are also declining because of those things, because of this problem. Now, next, the reason of loss of diversity is overexploitation. We have been, using it, all the plant and species, animal species, at a very fast pace.
So excessive utilization of economic and valuable species for commercial purpose is another reason that is leading to large number of population being declined related to plants and microbes and animals as well. So exploitation of raw materials of medicinal importance of commercial establishments is also declining. And as we talked about, we heard from Professor Dubey lecture that many of the important medicinal plants are being exploited for the drug because they have the potency for the drug, and R&D and other entrepreneurs are using it, exploiting. So there are more harnessing of such plants, medicinal plants of commercial importance, rather than afforestation strategies for this kind of medicine plants. Then we also have wildlife trade and overhunting, because we know that a lot of importance, commercial importance animals are there for which we need their fur and all other things. So we mostly are involved in trade and overhunting. There is a exotic species and competition also. This leads to competition between the exotic species and the native species for food and space, and therefore there is a threat to many local populations of plants and animals. Then we have the deforestation. It's very important because one of the major causes of the loss of biological diversity is deforestation. Increased population, shifting cultivation, permanent agriculture, mining, hydroelectric projects cause deforestation, which is taking about at the rate of 17 million hectare per year. That means it comes around 1 acre per second is the loss of forest. And according to an estimate, around 47,000 hectares of forest are destroyed. More than 16,000 hectares of land turned to desert, and between 100 to 300 species become extinct. This is on an average per day basis. The tropical evergreen forest in the world, covering about 7% of Earth land surface, that contain at least 50% of important species found on the Earth. Around 50% of the world plant species occur in the forest or near them, and therefore declining of forest cover at such an alarming rate is not a very healthy indication for the environment and also for the humankind. So another loss, environmental pollution is another cause. We know that a lot of air pollution, water pollution, land pollution, and many other kinds of pollutions are there, and the phenomena are there. These days we can, the climate change is also threatening the entire human civilization and also the agriculture sector. So these are many, it's a separate topic. We can talk about this, but there are a lot of factors that are related to air pollutions and water pollutions that are directly or indirectly depleting the pollution, depleting the biodiversity level of the country. Then we have natural calamities, and also the lack of environmental education and effective legislation are also cause of the loss of biodiversity. In the remote areas, in the tribal areas, I have been in the northeastern region also. The tribal people are very naive, and many people from across the world, they come and visit as a tourist, and they take a lot of materials of plants which are of very commercial value. And because these people have no idea about the intellectual property rights and intellectual, the tribal knowledge, they share with these people, and they go out and, this is how the intellectual property is exploited. And so also there is a need for effective legislation, rules and penalties and all those things, which in our country is being compromised many a times. So the rate of extinction of this biodiversity is about 2 to 8% tropical forest species have been lost between 1990 and 2015. Around more than 23,000 plants and around 5,000 animal species are threatened globally. 300 species of insects and birds depend on a single tree species. So you can imagine that if we cut a single species of a single tree, then around 300 species of birds and insects are displaced from that particular tree, and they are forced to go to another place where they will be facing a lot of competition from already existing birds and the local inhabitants. So extinction of tree species is disastrous. In India, around 15 to 20% of total vascular flora are threatened, and we know for students, we know already that read data book what it's all about. It talks about extinction process, different status, vulnerable, endangered, rare, and extinct and threatened. Many of the our plants are put into the categories of extinct and endangered.
and many of them are under the category of threatened. We'll be talking about medicine plants, National Medicine Plant Board. They have, there are various state bodies of this NMPB, and they generally on their website, they have 26 to 30 enlisted all the medicine plants which come under the red and above category. So prioritization of research and focus on validation of plants and else things is very important if you work on these selected group of medicine plants. So how to conserve, this deteriorating populations of biodiversity? There are many ex situ conservation, what we call as in vitro, there's tissue and cell culture techniques, which is very important, and it requires very little space. These are the advantages of tissue culture and generate large scale of cultures, that is plantlets, in less days of time. And it propagates outside seed harvesting season. If you have a lot of problem with some explants and plants, we can cultivate it and in vitro and transfer this to the field condition, even if there is a out of season. It's also boon for plant and plants conservation, and there are various techniques involved of tissue culture, like medicine culture, auxiliary birds, single cell suspension, protoplast cultures, organ cultures. A lot of background noise, Dr. Poonam. So there are, basically, if we talk about in vitro micropropagation, in vitro cultivation, that is biotechnological intervention. And when we talk about culturing the explants, when we talk about plant, it's all based on physiological paradigms. Like culture and nutrient media developed by physiologists, they give impetus to tissue culture. Similarly, if we talk about chloroplast fusion, cytoplasmic fusion technology, that is hybridization, hybridization, they are based on physiological principles, which encompasses both nutrients and many other things. Similarly, in regeneration of plants through tissue culture, it is the main role of GA and cytokines that based on concept of permeability, methylation, ethylation, cytokinins, ABA, and many signaling of abiotic stresses, fast carbon dioxide assimilation, and rapid translocations, enzymes involved in regulating various metabolic activities, and so are the genes which have been identified and engineered to develop transgenics for higher productivity, self-life, and quality, are all based on the biotechnological interventions which have roots in the physiological paradigms on the physiological principles. So this is mostly for many of your students who must be participating in this conference. As the teachers, we already appreciate and know what tissue culture is all about. Basically, for this is I have made for some students for the student purpose. This refers to technique of growing plant cells, tissues, organs, seeds, what we call as a explant or other plant parts in a sterile environment on a nutrient media. And basically, all these facts are based on the concept of pluripotency. We know that is the capacity of cell to develop into an organism by regeneration. The first pioneering work was on a tobacco plant that was raised from actively growing callus. And this has been exploited, this principle has been exploited in various culture like protoplast, cells, tissues, and organs in vitro. So this is in a nutshell the micropropagation, what we call as an in vitro propagation. And if we talk about in vivo propagation, that would be macro, 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 like grafting and vegetative cuttings and all those things. But when we talk about propagation in vitro, that we call as a micropropagation. And we can divide this into organogenesis and somatic embryogenesis. Again, the organogenesis and somatic embryogenesis are the processes which can be, lead to plant-like production using, direct organogenesis or indirect organogenesis. If we have indirect organogenesis, it involves callus. And if we produce, the multiplication of the shoots basically directly from the explant, it becomes direct organogenesis. So is the case with the embryos, indirect somatic embryogenesis through callus or direct embryogenesis directly from the explant. And then there is a formation of somatic embryos on the explant surface and followed by germination and plantlets.
And from callus also somatic embryos can be formed, obviously, by manipulating various cultural conditions in vitro and also the environmental conditions. The more we come across the literature with various genotypes and various explants, the more we come to know about what are the various factors that would govern the formation of somatic embryos from callus, and ultimately the formation, germination takes place, and the plantlets are produced. This is all about in micropropagation in general. Organogenesis can be, as I talked about, I just mentioned that it takes place through callus as well as explants. If it is a root, it is root culture. If it's shoot tip and axillary bud, then it is correspondingly known as shoot tip and axillary bud culture. The examples are thousands, but there are some important ones. The pioneering work on which the shoot tip and axillary bud culture were initiated, like the root culture were initiated, the leaf culture, mostly famous for Ralphia, as a director, Hordeum vulgare or Rhiza sativa, because these are the pioneering plants on which the leaf culture were previously initially tried, embryo culture, and then seed culture. So this is all a part of organogenesis. Now, the callus culture for the students, if we take about the part of explant as the leaf explant, you can take a tip, you can take the margin of leaf, you can take the basal part of leaf, or you can take the middle of. You have to avoid the veins. And if you directly put into the culture media, you know the formation of callus, and you know that what callus is all about, and this callus formation takes place. It has, benefits also. It has drawbacks also, which we can talk later on a separate issue. This organ culture, this is a plant. If you want to take a leaf culture, you take leaf. If you want to take internode, you can take internode. You can stem, roots, and so lot of background noise is coming. Somatic embryogenesis, the somatic embryos are derived from somatic cells. These develop into whole plants. As I just mentioned, that embryos are obtained either directly from cultured explants or indirectly from callus and isolated single cells. This has been tried in many plant species, including dicots and monocots, and it is one of the very versatile techniques for micropropagation of plant species, particularly in the forest trees species. And a lot of advantages are there, that it offers rapid multiplication through production of somatic embryogenesis in cell cultures, and therefore useful in conservation of bioresources. We'll talk this about also when we talk about synthetic seeds and cryopreservation at a later stage. This is somatic embryogenesis. The stages, different stages: globular, hard, torpedo, and cotyledonary. And from there, cotyledonary, we develop the plantlets directly. So this micropropagation, generally, we do the propagation of plants through tissue culture, through axillary budding, adventitious shoots, and somatic embryogenesis. These are the most three important part through which we can micropropagate on a large scale, that we multiply. And this requires 4 stages. We all know: collecting the elite germplasm for culturing, then taking back into the lab, washing them and sterilizing them, and then putting back to the inoculation on the laminar flow. And after having done that in suitable nutrient media under aseptic conditions, we transfer this to culture room or plant growth cabinet with suitable environmental conditions. So this all culturing encompasses 4 stages, and any part of plant could be taken as an explant in culture or nutrient media. We know that a lot of media are known, many for woody tissues, some kind of other media like plant woody media is known, but basically B5 and Gamborg's media, what we call as White's media, Nets media, and the most widely used is Murashik and Scoop MS media. You can take half strength, you can take full strength, you can take 1/4, depending upon the design of your experiment, depending upon what really you want to produce in that particular nutrient media. And finally, a large number of plants can be produced from a single explant. This is the beauty, that if you start with a single explant and without any hustle of contamination, without any problem, if your hands are very skilled, you can from a single explant generate hundreds of plants and then multiply in the same lab without going outside looking for other explant, and you can thousands of plants can be produced in vitro, and which you can do all this kind of hardening and then field acclimatization and transfer these plants to the field condition.
And the protocol says that your plants, in vitro raised plants, if they survive for 2 to 3 months, most of the 70–80% plants they survive, then your protocol is supposed to be successful. So there are 2 protocols. We do micropropagation, one in the lab and another outside the lab during the process of field acclimatization. So there is a lot of scope for students in R&D and in the biotech industries. If you are a good biochemist, you are a good physiologist, biophysicist, you can work on in the lab on the drugs production, on the micropropagation production. And there are people, agronomists and other plant physiologist groups are also there who takes care of the plants once they are transferred to the field conditions. And that is separate issue. So, you know, you have a scope of in this biotechnological sector of plant tissue culture. So advantages of micropropagation are small surface plants, difficult to be propagated in vivo, can be propagated in vitro, and then production can be maintained without seasonal variation. And it has enormous potential for conservation of plant germplasm and therefore the biodiversity as well. So these are some kind of pictures of organogenesis, somatic embryogenesis with embryo formation, and from there we have got the plants, likewise the organogenesis, and this is the meristem culture on the apical shoot tip, and finally you get this plant through meristem culture. So there is also plant genetic engineering is coming to the way where we can harness the genetic constitution of a good plant, where we have traits of very beneficial aspects, and that can be transferred into the plants in which we want to modify that plant for their quality, for their various good purposes. If that attribute is not present in one plant, we can transfer the gene that is taking care of that particular metabolite, that taking care of that particular enzyme or any metabolites. And this, if using this plant genetic engineering, we can transfer and produce in vitro condition the plants, they will behave like the parent plants. So we have agrobacterium tumefaciens and rhizogens. We have gene-gun microprojectiles, electroporation of protoplast, which we'll talk about a bit, protoplast fusion, microinjection, silica carbide fibers, micro laser, genome editing, and RNAi, which is the latest addition to this pool of genetic engineering. With all these tools and techniques, you can always get the transgenics, and it would be good for your food sector. It will be good for agricultural production sector, and that's what different labs are working. The university labs are also working, and the government aided labs are also working, like CSIR and DBT funded laboratories across the country. They are already working on this, how to make climate resilient crops. Because of global climate change, we are facing a lot of abiotic and biotic stresses. So we need to modify the genetic constitution of plants, and so that they are able to survive under these rigid conditions and stressful conditions. At the same time, they retain their property for what they are known for. So these are the techniques where these are taken into care to produce that kind of plants. We don't go into detail here because that is a separate issue here, but just a glimpse for the students. This is genetic transformation, permanent incorporation of new or foreign DNA into genome of cell. Transformation methods like protoplast fusions, in which we dissolve the cell wall using a lot of, some buffers are there and some reagents are there. Enzymatically, they are removed. Those in the field, they already know. We need naked plant cells from 2 different plants can be mixed together and forced to fuse. And these protoplast are plant cells with a plasma membrane, but without cell wall. And therefore, they can be referred as functional individual cell with plasma membrane as outermost layer, we all know, and the only barrier between environment and cell contents. So a lot of manipulations can be done experimentally in the lab. This is the beauty of the isolated protoplast, and so is the case when we talk about protoplast fusion and somatic hybridization. So how to isolate the protoplast? We take plants, peeling of sterilized leaves. The peeled leaf parts are incubated in cell wall digesting enzyme, and plasmolysis takes place. And then there is a release of protoplast. We wash them, we isolate this, we plate the protoplast. Then there is a regeneration of cell wall, which you can view. Then microcalli are obtained, obviously, with the manipulation of nutrient media, and then callus, and from callus organogenesis, and then whole plant can be, the cycle can be completed in this way.
The protoplast development, there are many things. So you have to isolate and you have to induce, and then you have to develop this protoplast. So normally regeneration of cell wall starts within a few hours after isolation, and followed by cell expansion, and then the cell division, which normally takes, depending upon the genotype, mostly 2, very rare, but at least 4 to 8 days. Then cell colonies are formed and the callus are put in an osmotic free media, and then organogenesis and embryogenetic differentiation takes place depending upon your design of experiment, what you are looking for. And a mixing of protoplast of 2 different genomes, that is what we call as a protoplast fusion. We are coming to somatic hybridization, which really is the beginning, was the beginning of transgenic technology in 1970s, started with Larbeck, the scientist who carried out this kind of work. This is the spontaneous fusion from callus tissue. They do not regenerate into whole plants. Whereas the induced fusion, we take help of PEG, which is high yield, gives good results, sodium nitrate, calcium at high pH, and electrofusion. So electrofusion, what we talk about, protoplast fusion of 2 distinct species of plants are fused together to form a new hybrid plant with the characteristics of both. We talk about protoplast fusion using electric current, and this is very less damaging than chemical. What will then it take place is that there is mostly we take the help of fuses and material, dextron electrical stimulus. The protoplasts are brought in close contact by a non-uniform alternating AC current between 2 electrodes. Fusion is initiated by field pulse of high voltage, around 500 volt to 3 kV for very 10 to 1000 microseconds. And then protoplast, when initiated into high frequency AC current in a low conducting medium like mannitol or sorbitol, between 2 parallel electrodes, which are separated by 0.1 to 1 millimeter apart, what happens that they act as dipoles, and they are attracted to each other along the strongest field lines. Once protoplasts are coming in contact, a high frequency of fusion is achieved by disrupting the plant membrane of protoplast with the short DC pulse. This approach leads to only production of viable heterokaryon. The once heterokaryon is formed, following events occur in order, like wall regeneration by heterokaryotic cells, fusion of nuclei of heterokaryon to produce hybrid cells, plating and production of colonies of hybrid cells, selection of hybrid subcultures, and induction of organogenesis, and likewise the hybrid colonies and the transfer of mature plants from regenerative plants take place. So this is mostly very important and most of the preferred way of transferring the genome, DNA. So this results in heterokaryon cell containing 2 or more nuclei from different cells, homokaryon from same cell. This allows us to regenerate cell wall and then grow into callus, and callus turns to shoots. And this is what I was talking about, somatic hybridization. We know that sexual hybridization is limited in most cases to cultivars within a species or a few wild species that are closely related to a cultivated crop due to incompatibility, sexual incompatibility. And plant protoplasts offer exciting possibilities in the somatic cell genetics and crop improvement. There is a fusion of isolated somatic protoplasts and development of their product, what we just call as a heterokaryon, to a hybrid plant, and the nucleus and cytoplasm of both parents are fused, but not in hybrids. This is here the protoplast, A and B parents. There is selective chromosomal loss. In this case, the hybrid is formed, and this is protoplast of characteristics of both the parents are there, and with the selective chromosome loss from one parent, we get hybrids. And these are asymmetric hybrids and symmetric hybrids. They have a large application in the improvement of crop cultivars. So symmetric hybrids, these plants retain the full or nearly full somatic complements of the 2 parental species. And such hybrids provide unique opportunities for synthesizing novel species, which may be of theoretical or practical interest. And asymmetric hybrids, which are very important if you compare with the symmetric one, because they show the full somatic complement of one parental species, while all or nearly all chromosomes of the other parental species are lost during the preceding mitotic divisions. And the available evidence
indicates that such kind of hybrids, that is asymmetric hybrids, show a limited introgression of chromosome segments from the eliminated genome. And that's why this is due to the drastically enhanced chromosomal aberrations or mitotic crossing over in vitro. So this is the beauty of this. But basically, we talked about hybrids offers, a lot of more, insights and inputs. If we talk in terms of in vitro culture, they are the cells containing nucleus of one species but cytoplasm from both the parent species. And we also have shotgun approach to transfer the DNA, where the DNA is coated with microbullets of gold or tungsten, and they are shot with into growing cells. The DuPont company holds the patent. This is of the US company. I'm not going into detail how to shot into the growing cells these DNA coated microbullets. This is all available in textbooks of tissue culture or biotechnology. This injures, the cells, and it has got very success rate. Then we also have PEG-induced fusion, which is also used for study of drought, stress, pores open similar to electroporation. Then we have microinjection, where single cells from culture are held stationary with gentle suction on the needle, and the needle that is injected with a tiny syringe loaded with DNA. You need a lot of small pores for this, and we can take the help of electroporation technique. This is, we have already, I already covered high energy pulses, 50,000 volts for a millisecond. And this is called tiny pores to open, allows DNA to enter the cell. Okay, so we were talking about micropropagation, and one of the beauty of plant tissue culture is synthetic seeds. So as we talked that you can always take the seeds, you can always take embryos, you can always take callus, you can always take any product of that, and you can preserve in a thin layer of hydrogel and store it for a longer period of time. As and when required, you can take out these synthetic seeds from the cryopreservation material, where you have put it under minus 196 degrees centigrade. And this is what we call as synthetic seeds or encapsulated seeds or artificial seeds. And we take the help of calcium alginate or sodium alginate or sodium pactate as hydrogels, which protect the the metabolism of the seeds as such. And when we put into the cryopreservation, the metabolic activity ceases at this temperature, so that there is no damage done to the inner contents of the seeds. And when you want to really sow these seeds, you can thaw the seeds, and there are stepwise processes. And then when you sow it into the soil, it will behave as a parent seed, and the plantlets which you grow, even after 5 years, 10 years, 30 years, it will behave like a parent plant. And the breed true can be grown into pots to raise seedlings or into the field conditions. Offers surplus and biodiversity conservation through cryopreservation, as I said, because you cannot put this under room temperature or minus 20 or minus 40 or minus 80. You can put it, but it may not survive beyond a few months. But if you want to, store it for a longer period of time, 5 years, 10 years, and people have even, noticed that even after 20 years of cryopreserving these synthetic seeds and many other, tissues, they were able to, get back the true behaving parent plant from the same explants which were cryopreserved for such a long period of time. Another beauty of plant tissue culture, or you can say that micropropagations in the biodiversity conservation is meristem culture, where you can produce disease-free plants but not disease-resistant plants. And mostly shoot meristem culture offers the best possibility for this. And you know that there is a rapid cell division in the shoot meristems, which is faster than the nuclear protein multiplication, and that's eliminate virus-free cells. And this, people have got from callus in potato, gladiolus, tobacco, and many other plants. They have eliminated mottle virus, potato virus, sex, mosaic virus, and many more viruses. Also, increased resistance to fungal pathogen, phytophthora infestans have been also observed, not only in case of viruses, but few fungal and mycoplasma disease have also been cured using meristem culture in clonal plants through mesophyll cell protoplast of potato. So this is, the meristem tip 0.1 to 0.5 millimeter,
This is the dome, apical dome, and this is more of the giving you a picture of apical meristem, how it looks like. Some of crops have been already propagated by shoot tips. The list is uh, long, but some of the important like Ilium, Artocarpus, Musa, Pictoriza, Saccharum, Morus, and the responses they have got using the shoot bud shoot tips, and they have been able to generate multiple shoots, plantlets, and embryos. This is the the procedure of meristem culture. The culture procedure remains the same of micropropagation. Only you have to isolate the single shoot tip and then put it in the desired nutrient media, and where they will multiply, and then you can do the rooting and hardening and acclimatization, and then you can transfer into the field condition for the your benefit. Production of virus-free plants, as I said that it's used for multiplying, maintaining, storing, and distributing plants. And maintaining unique plants for breeding, propagation, or distribution can be expensive in terms of time, space, and labor required. But in vitro propagation of apical meristem is important for virus elimination therapy. And using this, people have taken the tissue culture germplasm, and that are helpful to breeders and nurseries, and also meeting quarantine regulations. So many times when there is, if you want to get seeds or any explant from outside the country, there are quarantine stations at the airport, at the sea, and the plant pathologists and tissue culturists or biotechnologists are there. They take the sample and then raise the plants through various tests, and they are come to know that whether these plants are okay or not. And that's why a lot of certifications are required from the importing country that this is safe and everything. There is no genetic manipulation. It's not going to be used for many other things. So a lot of legal actions, and you have to follow regulations, and it will come to firstly in the New Delhi, and from there NBPGR is there. They will ascertain, and then they will come to your lab or to your department or to university. The production of this germplasm may be a source of genes for improving such traits like insect and disease resistance. So the beauty of this, production of virus-free plants through shoot tip meristem is also that it improves quality, drought or cold tolerance. We have been using to raise the plants, stress-tolerant plant. We are taking care of this kind of shoot tip meristem for drought resistance in our lab. Then increased yields, low chilling requirements, adaptation to mechanical harvesting, or longer shelf life in distribution and retail channels also. Many times foreign pathogens continue to pose a problem to the threats to the crops in the region where they are transported. So it prevents introduction of quarantine pathogens in important prohibited germplasm using a range of diagnostic techniques to intercept them, like ELISA and many others. Develop improved methods of detecting quarantine pathogens are there, which investigate the etiology of poorly described diseases and pathogens. They eliminate quarantine pathogens from valuable plant germplasm. Complete therapy on sweet potatoes infected with Gemini viruses is the monumental work that was established. And it also provides tissues from in vitro therapy for PCR detection of Gemini viruses in sweet potatoes. A very good work on this, which was initially done and proved its effectiveness. The mechanism is very simple. Apical meristem tips are excised in sterile condition, either from in vivo or in vitro plants or highly proliferating meristems. Then you transfer into the tubes, and then you maintain the tubes into the cultural conditions. And these are some kind of plants, but there is also a good scope of heat therapy, because if you combine thermotherapy with the meristem culture, the efficiency of virus elimination and good quality crops production increases. So what you do is that you expose the plants to 35 to 38 degrees centigrade firstly, and then you take the explants or the shoot tip of that particular plant, which have been growing under these conditions of temperature, and then you follow all the procedures. Then when you get the plant, they behave very nicely. Their performance is very good compared to only meristem culture. So high temperature treatment has been widely used in production of virus-free plants. These are some of the examples. Okay. Cryopreservation, as I was telling you, arrest of metabolic function of biological materials stored at low temperature. Materials treated with cryoprotectants. Firstly, DMSO are the materials. You have to chemically, protect them and then put into the, at minus 196 degrees centigrade, and can be stored for a long time and used as and when required. And what we have been using for this: cell suspensions, calli, somatic embryos, shoot tips, anthers,
all are subjected to cryopreservation, and plants are regenerated. So this has been tried for rare genotypes, recalcitrant seeds, and embryos, and they are very good in biodiversity conservation through germplasm bank and cryobank. We have a lot of banks in India under the National Repository Bank funded by DBT, whether it is cryobank, pollen bank, germplasm bank, any bank, seed bank, everything is there. You can also deposit yours one with proper procedure. So we are also taking care of tissue culture for raising tolerant plants. Tolerant plants mean abiotic tolerant plants. If we talk about salinity, we know that a lot of problems of salinity, drought, and heavy metals in many areas are there. So one example is like if we talk about drought, you can induce the drought using PEG, and the plants following micropropagation, whatever you get, will be able to survive to a certain level of drought. And if you transfer these plants to a field condition, to the areas where they can survive up to that particular drought for which you have tested. So you can always raise, abiotic tolerant plants through tissue culture also. With this we have been doing in our lab for phytoremediation, for heavy metals, for salinity, for drought, and the method, is quite successful. Now, the medicinal plants, as I was talking about with reference to medicinal plants, I will give very rapidly some slides of our own work on certain selected plants here. We know that plant and their parts are used in Ayurveda since Vedic ages, and sizable number of plants are well recorded in Rig Veda, we know 2000 BC, and later on the numbers are increasing in Atharveda. This I will skip, this is all about Ayurveda. The basic purpose of collection of these medicinal plants is the plant substances, what we call as a bioactive compounds, bioactive principles, or metabolites, or phytoconstituents, whatever you call, is to produce best quality drug with safety and efficacy. According to Charaka, the best drug is that which alleviates disorders. Further, Charaka has emphasized that any plant substance should have 4 basic qualities to become an ideal drug. Abundance, it should be very much abundance in the plant. Effectivity, the precision of its efficacy, various pharmaceutical forms that it has the ability to be combined. So there should be chemistry, biochemistry should be flexible, that it can take different ways of formulations, and the rich in property. So these are 4 basic characteristics of that metabolite or bioactive principles that are desirable in any medicinal plants. Okay, so we will be talking about Oroxylum indicum, Rubia cordifolia, Piper melissua, Eliocarpus, Rudraksh, Stevia, and Gymnema that I have worked on many medicinal plants in our lab, but these are some of the selected ones that I will be talking about, that how with different strategies you can really conserve these highly important medicinal plants. This is, Oroxylum, which is very important anti-cancerous plants, and also in various cough and syrup Ayurvedic formulations it is coming. So you can see that how we have done this shoot multiplications with different combinations of BA and for 7 weeks, 12 weeks, 8 weeks, and likewise this is simple from nodal expanse, you see. And this is how for the students that we do the hardening, and then we acclimatize it, and later on it is able to be transferred to the field condition. Now, this is also one of the phytochemistry, if you want to really study that how much of the phytoconstituents are present, like in this Oroxylum, alkaloids are there, reducing sugar, tannins, steroids, flavonoids, phytochonides, saponins are there. So you can study that in vitro notes from where you have taken the experiments, and this is in vitro notes that you generated the plants in vitro. You can study also using HPLC and HPTLC that what kind of phytochemical constituents are present in your microshoot generated plants or not. So this is one of way of phytochemistry you can do with the tissue culture as well. Yes, this is what I was saying. You have to calculate RF value for saponins, flavonoids, or any other metabolites that are present in that particular plant which you are studying using various solvent methods, specific solvent methods, and spraying reagent. And you can see that air protocol of micropropagation really, if it changed the profile of the bioactive principles or not. If it is not, then you can say their protocol is very good because it did not alter the phytoconstituents level.
because in many 2-3 months of survival in the culture, there is every possibility of summa variation and many other attributes that the synthesis of that particular bioactive compounds could be compromised. So you have to ensure that after having done this protocol, obviously you have multiplied the plants in large number, but whether it is able to retain that medicinal property or bioactive principles or not, you have to do many things. And one of the things is that you have to check, verify using the phytal constituents for phytochemistry. And we'll talk that also you need to have the stable genetic stability also to ascertain where you can take the help of molecular markers, and which we have done, and we will show you that how really you can ascertain that there is no change in genetic constitution as well, and that is good for your protocol as well. So this is what we talk about Oroxylum again in MS media and different this Rubia cordifolia is very good. This is a DBT project that we worked on dye production, and you can see that how really it is being cultured in vitro under MS media and also in many other media like B5 also. This is the rooting, you see rooting how it is formed. The beauty of this thing is that you don't have to put in the rooting media because the roots are normally going very nicely here. But this regeneration of shoots is very important. Then through callus formation also, how the callus are being formed, and thus this callus can be transferred to nutrient media, and you can entirely get the medicinal plants, Rubia cordifolia. Okay. Next is, this is Piper mollissia, as very important plant, threatened medicinal plants from Arunachal Pradesh, and is used for various ailments, particularly bronchitis and dyspepsia, and Hajmola and cough syrups में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है, और ये बायो एनहेंसर के रूप में भी जाना जाता है. जिस समय हम लोगों ने इस पे काम किया, there was no report on micropropagation. So initially we tried to grow this because it was very difficult, but we could be able to grow it at least to the hardening stage. This is how you can do with Piper mollissia. This is Eliocarpus, Rudraksh, Ekmukhi, Domukhi, Panchmukhi, various kind of Rudraksh, which is anti-aging effect is known for. Electromagnetic and inductive properties. It has positive effects on heart and nerves, relieves from stress, anxiety, depression, palpitations. You must have heard about this. And not many work was done in the northeastern region for this. We have tried to do this through NMPB project, and using MS media, we could regenerate some plants of Eliocarpus and transfer to field conditions in the low level of Himalayan region, and they were able to survive, still surviving. I hope I have moved from there. Now I don't know because more than 10 years, more than 10 years, yes. Okay, so stevia is another plant that we have been focusing. It is, anti-diabetic plant, what we call as a madhupatra, and it has got stevioside and riboside, which is more than 300 times sweeter than that. And its good thing is that it is non-nutritive, high potency sweetener, and it is a good substitute of sucrose. And it has stevioside and riboside, what we call the ditryptophan glucosides. It has also got antioxidant and antimicrobial properties, and is recommended for diabetes and cardiovascular and skin problems. And it creates, beauty is that it creates no digestive problem. And, it does not break down chemically inside your, the digestive tract, and it is safe for diabetic patients, and all the tablets are coming on the table now. So we have tried this under UGC project, and you see that with the subculture fourth passage, how much good growth of stevia plant is getting. We have organogenesis through callus formation, and you see how it is being done ready for field transfer. This is in 3 biotic and vegetosis Springer already published, and this is the secondary callus production of this one using B5 media, using various combinations of auxin and cytokinin. We also did the HPLC analysis, how you can do that. I was talking about phytochemistry. You can take the help of HPLC, and using standard, you can assess what was there in the parent plant and how much stevioside you got in the in vitro regenerative plants. It should be more. If it is less, your protocol is not good. So if you want to transfer this to medicinal industries, R&D industry, such kind of plants, they will be interested whether its bioactive principles is not compromised. So you have to assess that, and you can assess that through HPLC study. Yeah, this is how you can do this.
And we also did, the ISSR analysis using primers that, the how much is the whether this binding pattern changed or not under in vitro conditions and under different compared to the standard one. So there was no change in the profile, and we have also done this on drought stress also, and then you have to compare whether this is being compromised or not. We have done also a lot of effect of signaling agents on this. If they are able to alleviate, increase the content of stereoside, maintaining the genetic stability or not. So this is not the story, the crux in this our presentation. This is something else. I'm just talking about that, trying to give you that not only generating multiplication of high number of plants are important, you have to ensure that its property, medicinal value, or whatever it is there, dye or whatever you want to do, that property is not compromised, genetic stability is not compromised, then the protocol is good enough. Okay, so yeah, you see this is PEG induced. What we have tried to generate this subject this stevia into the drought condition. Then we have used SNP NO donor. This is alleviates abiotic stress. A lot of work is going on nitric oxide signaling in my lab, and this is the pitricin. This is pitricin NO. So you can see that how the morphology looks like, and then when you add these ameliorating agents, signaling agents, how it gives a better performance. We have alleviated, we have checked the HPLC also, we have done the genetic stability also, that how really if it is good or not. You see, this is how it looks like in vitro propagation of stevia under drought test in half strength MS media. You can see that how it looks like. This is 5% PEG, this is 10% PEG, this is 15% PEG, and this is coming. How nicely it is coming, and we have acclimatized nicely with this one. So this is how you can all check with this. You see the HPLC of this with PEG induced alone, drought stress, drought with one ameliorating agent, another ameliorating agent. So a lot of things can be done using tissue culture. This is what I really want to convey the message. Same the profiling of analysis for under these studies. So you can do a lot of abiotic stress tolerant management also. This is all stevia transfer in the field condition, how usually it is breeding. Stevia plants, mother plant, stevia plants generated in vitro, and with also with PEG induced and ameliorated with the SNP and many other signaling compounds. Another Gymnema sylvester is another anti-diabetic plant we have done, and we have worked on this. We have propagated it, and we have also published a lot of papers. We have also tried to see how really pharmacognosy it is valid. We have tried to see the effect of gymnemic acid, gymnemagimine, which is bioactive compound, that how really it is controlling diabetes in rats. In rats where we have to take the peritoneal macrophages, and we did the splenic lymphocytes, and we did the peritoneal macrophage superoxide production, NO production. So we have proved that immunologically it is a good modulator of immunology under the normal rats also, and under the diabetic rats also. And this we have done like GS leaf extract as well as active bile compounds. Gymnemic acid significantly stimulate in vitro immune responses of macrophages isolated from normal and diabetic rats, and the same is true for splenic lymphoproliferation. And this work was published in Phytotherapy Research and PLOS ONE. Similarly, we also demonstrated that GS extract not only improves the metabolic disorders in diabetes, but also ameliorates the depressed immunity in diabetes and can restore the innate immune function. The traditional knowledge on the use of Gymnema in treating diabetes was scientifically supplemented in our study for its immunomodulatory properties. So I'm not going to give here the entire diabetic and pharmacognostic work here, because the aim of this slide presentation is different. Okay, now coming to orchids. This is the last phase. I think it will take 10 minutes only. I hope everything is in time, Dr. Poonam. This is Orchidaceae, which is the largest family of the flowering plants distributed almost throughout the world. And in the northeastern area like Manipur, Nagaland, and to some extent in Arunachal Pradesh, they export this,
to various Thailand and many other countries, and a lot of money they fetch. So I selected two of the plants, Hydrocalyx parishi, which is endangered plants in that area, and Ascocentrum empulaceum, which is also endangered one. These are the composition you can try with MS, MKC, VNW, INY. These are specific to MKC, VNW, IN. Mostly they are used in orchids only. So you try a lot of micronutrients and micronutrients manipulating vitamins also, deviating from the known composition of this with a lot of manipulations we have to do in this vitamins and other things to get maximum proliferation. So you can see that various growth regulators are being implemented for multiplication of protoform-like bodies in Hydrocalyx. So how beautiful the pictures are from the Hydrocalyx from different sources. Yeah. This is again, say, seedling growth response in Hydrocalyx parishi. We took the seeds and then supplemented with 50% coconut milk and 10% banana pulp. No, we wanted to make it more economical. So rather than using a lot of sucrose and a lot of other adjuvants, growth additives, we tried to use coconut milk and 10% of banana pulp, half ripened. And we were very surprised to see that it was very good responding compared to normal composition of nutrient media and regulators. So this was very economical, and you can see the beautiful cultures of these Hydrocalyx plants. And finally, we have tried to transfer these into various potting mixture, and you can see that the potting mixtures like seedling waste from this media hardening compost mixture, brick, charcoal, tree fern, that gave the best response of proliferation and sustainability of the culture plants. This is Ascocentrum, which is very notorious and not very good. We have to try a lot of composition. Many times the seeds of orchids are not very good. You must have heard about this. So we have to do a lot of manipulation of environmental conditions with the growth regulators, and then a lot of growth additives we had to add. And finally, we were able to germinate the seeds. And then this is the inflorescence bud culture. And you can see that how with different media and everything, it is responding. And this is another morphogenetic response of Ascocentrum, where we try to inoculate axillary buds in the Archimedes media. Nicely growing, we will be able to transfer 5 to 10 shoots from single explants. And all these have been, transferred, and in the Forest Institute of Arunachal Pradesh has been done. Again, this multiplication of protoform-like bodies with callus and shoot buds in Ascocentrum. You can see this is from our lab at that time, and we were able to induce a lot of plants and then transfer to the orchidarium. Yeah, again, the seedling growth response in Ascocentrum. So a lot of scope is there that how you can deviate from, and you can think of many other economical terms. Like I have also used, you can also use simple tap water also many times, sterilize it. Don't use double distillation water because it is cost effective. It takes a lot of money. And many times, depending upon the area, tap water simply works very nicely. And all these kind of casing, hydrolysate, coconut milk, banana pulp, and all these have worked wonder in propagation, and even given a better response in orchids. And they have overcome the germination problem in orchids also. This is the potting mixture. We have tried a lot of potting mixture on the orchids. And finally, I think I would finish with this. I hope that I was able to, apprise you of various techniques of micropropagation, what can be done to conserve the biodiversity, how the tissue culture involves phytoconstituents, how you can do the molecular works also related to this, how you can produce the climate resilient crops also. And finally, I would like to acknowledge those persons who were involved in these cited medicinal plants and orchids, Dr. Anamika Boro, Dr. Ringam Valashadang from Manipur, Dr. Purni Madhuve, Dr. Pallavi Singh, Dr. Vineet Kumar Singh, Dr. Naveen Pradhan, Ms. Sankita, who is working on the effect of brassonolites on stevia, and Akanksha Guru also, who is working on another signaling
effect of signaling agents. And all these medicinal plants and the orchids projects were funded by DBT, NMPB, CSP, UGC. Thank you very much for your patience hearing, and I would like to thanks again the organizers for giving this opportunity. If there are queries, I would be happy to answer them. Thank you. Very nice deliberation, sir. You really match what has been said in your introduction, and your work is really very beneficial. Now, I request participants, if you have any queries, you can connect or you can send it in your chat box. Hello. Yeah. Sir, my question is that is there limitation from plant side also, means which plants can be means micro propagated or not, because field crops are usually not done. So No, you have to try. I mean, mostly you will have to avoid the, if the plants are herbaceous and shrubs in nature, then it's not a problem. If they are of woody nature also, it is not a problem. Unless and until there is a lot of exudation from the woody expands, then there is a problem because they inhibit the micropropagation processes. Otherwise, many of the dicots, most of the dicots you can multiply without any problem. Yeah, sometimes some inhibitor compounds are produced, some kind of, there are strategies also to overcome all those things. You can add activated charcoals, you can have PGP. There are many other compounds are also there. You can put in the nutrient media to which will absorb all these kind of inhibitory substances that are produced, phenols and many other things because of the woody nature of the explant. And probably it might work. So you have to try. But as far as herbs and shrubs are concerned, any plant, whether field plants or any plant, they can all grow without any problem. Yes, but sometimes, many times what happens initially with tissue culture, you have to show perseverance and patience and hard work, because many times contamination is a great problem. My students many times have contamination problem, 6 months, 7 months, and they're on the verge of, भागने के चक्कर में था लोग नहीं सर नहीं होगा. But after having all this kind of exercise and skillful operations, once the results start coming, you can compensate it within 1 year. No problem at all. Only thing you have to, your hands are to be very skillful, and whatever you are doing, you have to focus. When you are inoculating, focus everything. When you are sterilizing, focus everything. And obviously, there are many strategies are there, many ways of there are for aseptic sterilization methods are there, which you can deviate from what normally is the practice. So you have to be ingenuine. Ingenuity is very much there, demanding. कि जो लिखा है बस वही करना नहीं है, वो करेंगे तो हो सकता है वो उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए कहा गया हो. आपका प्लांट, आपकी जो मेटाबोलाइट्स है उस प्लांट की डिफरेंट हो सकती है, उसका डिमांड कुछ और हो सकता है. तो आपको उसके डिमांड को समझना होगा, एंड वो समझने के लिए फिर आपको कुछ इधर उधर के हिट एंड ट्रायल मेथड्स भी करने होंगे. सो यू हैव टू कीप योर आईज ओपन एंड ये सब चलता है इसमें. माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, दे फंक्शन ओनली व्हेन ओपन. तो अपने ब्रेन को हमको अप्लाई करना है, तभी वो काम करेगा. So not necessarily every time thumb rule जो है वही मेरे को फॉलो करना है. ओके सर, थैंक यू सर. सर मैं अभी आपका स्टूडेंट ही हूँ, BSc कर रहा हूँ सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से. क्या बात है, वेरी गुड. कम एंड मीट मी सम टाइम. अरे सर थर्ड ईयर में है सर अभी. वेरी गुड, वेरी गुड. सर नाम तो बताओ, स्टूडेंट नाम. हाँ, स्टूडेंट नाम बताएं. शुभम पाल. तो सर आज का दिन एचयू के लिए डेडिकेटेड हो गया. एक्चुअली हम लोग सर से पढ़े, काफी अच्छा लगा हमको. सेकंड ईयर में पढ़ाए थे सर, बहुत अच्छा पढ़ाए थे. चलिए, वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू. सर मैं एक चीज पूछ रही थी, जैसे राजस्थान, जैसे वी आर सेइंग कि थिंक लोकली एंड एक्ट ग्लोबली, दूसरा टाइप. तो हमारे यहाँ कोटा रीजन के आसपास ये एनोगाइसिस बहुत है, धोकड़ा. और ये आवाज नहीं आ रही. सर इफ यू कैन स्पेयर टाइम, मैं एक छोटी सी क्वेरी थी
Yeah, sure, sure. कोटा Please. के पास में धौकड़ा जिसे कहते हैं एनोकाइसिस, ये बहुत Yeah. अब मतलब खत्म होता जा रहा है, एंडेंजर्ड होता जा रहा है स्पीशी। और वो जैसे ठीक, आपने कहा कि ये भी एक वुडी और एक ट्री के जैसे है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को जैसे मोटिवेट करें कि वो कुछ माइक्रो प्रोपगेशन स्टडीज की तरफ अग्रसर हाँ। हों, तो कुछ बेसिक चीजें मतलब जैसे होता है ना कि सम परसेंटेज ऑफ सक्सेस दिख रहा Yeah. हो, तो shall we go for it? Yeah, you can try. You can try with the embryogenesis, and you can try with the leaf culture of those things. Starting Okay. first to produce, try to produce callus, and probably from there. Because if it is a large tree, then Yeah. it's really becomes very difficult, very Okay. difficult. So Okay. the juvenile explants of leaves you can take, Mhm. and the leaf shoot tip of that. And if Okay. you can produce embryos somehow, probably, Mhm. then it will might work. But it requires a lot of manipulation of nitrogenous compounds in the nutrient media. Okay, sir. Yeah, you So have to. definitely, if any of our student takes interest in it, Yes, we'll obviously, we'll take your obviously. help. And also you'll have to look for those nutrient media which are good supportive for woody kind of plant explants. Okay, sir. Woody Okay. plant media is one of them. Any other participant interested in asking any question? Now over to Poonam. Thank you, Dr. Padmanabh, for a very informative and knowledge-filled talk on micropropagation and how to raise virus-free plant detection of pathogens, cryopreservation, and how to propagate medicinally important plants using tissue culture techniques. Thank you very much. Thank you very much. सर हम आपको दोबारा मौका देंगे फिर और बिल्कुल देंगे, आप दूसरे एक्सपेक्ट पे देंगे, आप दूसरा एक्सपेक्ट बताइए, दूसरे पे हम लोग बात करेंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे हम ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको फिर बुलाएंगे. Thank you very much. I can see many of my friends. Nagendra Dwivedi is also there. Hello to Nagendra, and thank you very much to all of my acquaintance and you and Madam Sir, Anita Fatima. Bharti is also there. Anita Bharti is also there. Oh, Anita is also there. Hello. Sir, I should say that today is BHU's day only. Yes, yes. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Now we are going to start technical session 3rd for oral presentations. And first I invite Dr. Mamta Chaudhary to present her paper.
Am I audible? Yeah. Good afternoon, everybody. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Today I want to tell you about scope of ecotourism in special reference to Mukundra Hills Tiger Reserve in Kota district. Ecotourism is a responsible travel to natural areas which conserves the environment and improves the welfare of local people and involves interpretation and education. Ecotourism consists of ecosystem and tourism. It is a tool for sustainable development which emphasizes on conservation, traveler responsibility, personal growth, and environmental sustainability. India has the potential to provide ecological, economic, and social benefit to the local community. It is land of varied geography. India is one of the 12 mega biodiverse countries. It has rich cultural heritage like the Himalayan region, Kerala, the Northeast India, Andaman and Nicobar Island, and the Lakshadweep Island. Thenmala is a first plant ecotourism destination. India has huge scope of ecotourism. It increases foreign exchange. So there is a need of development of infrastructure facilities. Ecotourism provide balanced regional development, generating employment and maintaining peace and goodwill. As we can see in graph, India is earning more foreign exchange year by year. Ecotourism can be a big milestone to earn foreign currency. In India, there are many national parks which are rich in biodiversity, like Jim Corbett National Park, Kevladev National Park, Kaziranga National Park, and Gir Forest National Park. In India, there are many national parks which are rich in biodiversity. India has 18 biosphere reserves to protect larger areas of natural habitat than a national parks. Some of bioreserves are Gulf of Kutch, Nilgiri, Great Nicobars, Sundarbans, Nanda Devi, Gulf of Banar, Nokrek. Recent initiatives in ecotourism in India are Horsley Hill in Chittor district of Andhra Pradesh, Satkoshi in Odisha, Morni Pinjore Hills and Sultanpur National Park in Haryana, Wairad in Kerala, Tourist Circuit in Assam, Machuka destination in Arunachal Pradesh. Rajasthan can be a hot spot of ecotourism because it is home to several well-known large mammals. Rajasthan has wide variety of protected wildlife. Its climate and geographic diversity makes it the home of over 250 mammals and 150 different species of bird, many which are unique. About 50% of these species are local and the balance migratory, mostly from Eastern Europe, Northern Asia and Africa. Many wildlife sanctuaries and national parks are found in Rajasthan, like Ranthambore Tiger Reserve, Kevladev National Park, Sajjangarh Biological Park, Dara Sanctuary, Mount Abu Wildlife Sanctuary, Dal Chapar Sanctuary, Sita Mata Wildlife Sanctuary, and Sariska National Park. Dara Sanctuary is a thick forested sanctuary lying along the southeastern border of Kota. This hilly sanctuary with thick forest is worth a visit. The animals here include wolf, sloth bear, chinkara, and leopard. This sanctuary is stretched in the area of 250 square kilometer, almost 50 kilometer from Kota. The best time to visit is between February and May. Mukundra Tiger Reserve is now the third tiger reserve of Rajasthan. It is also known as Dara Wildlife Sanctuary.
In the past is located in the southeastern part of Kota, town of Rajasthan. In the past, it is the royal hunting ground of the Maharaja of Kota. This place is located at a distance of about 50 km from Kota. It is located on the eastern bank of Chambal River and its tributaries touches the area. The Dara Wildlife Sanctuary was declared National Park, Mukundra Hills National Park in 2004. Total area of the national park is about 250 square kilometer. Mukundra Hills National Park is consisting of 3 wildlife sanctuaries, namely Dara Wildlife Sanctuary, Chambal Wildlife Sanctuary, and Jaswant Sagar Wildlife Sanctuary. This park got the approval of National Tiger Conservation Authority (NTCA) in 2013, and then the Rajasthan gets its third tiger reserve in the form of the Mukundra Hills Tiger Reserve, and now it is the home of 4 tigers, which is recently shifted here from the Ranthambore Tiger Reserve. The whiteways of Mukundra Hills are yet to be human exploration. The breathtaking views, migratory birds, and the ancient monuments make Mukundra a true natural delight. But in spite of its rich biodiversity and extraordinary charm, Mukundra has failed to show and maintains its developmental status. For many decades, the region didn't see any major signs of development, and when it did, it failed to maintain the position due to mysterious tiger deaths. Hopefully, all of it will change when the reserve will be open for tourists to visit and explore. So, we can conclude that the scope of ecotourism is very high. Ecotourism industry flourishing day by day. Careful planning and targeted oriented approach can be useful for ecotourism. Government scheme and policies promoted ecotourism. Responsible travelers empowering local communities to fight against poverty and to achieve sustainable development. Thank you. Thank you, Dr. Mamta. Now I invite Jyoti Richaria to present her paper. मैम 1 मिनट इसकी स्क्रीन शेयरिंग कहाँ से बात करते अपन? So, a very good afternoon to all of you. I am Jyoti Richaria, research scholar in Botany Department in Bipin Bihari College, Jhansi. I am doing research under supervision of Dr. T.K. Sharma sir. Here I am presenting a small portion of my research work, that is screening of fungi for xylanolytic activity. Hello. So these xylanases. Jyoti Richaria. Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा पास से बोलें, जोर से बोलें. Yes, ma'am. So these xylanases are the enzymes which are produced by different microbial systems like bacteria, fungi, actinomycetes, yeast, and other microorganisms. They are the enzymes which have the capacity to degrade the xylin, that is the major component of the hemicellulose in the plant cell wall. So they cleave the xylin and convert it into monosaccharide, that is xylose. So because of this property, they are widely used in different industries like pulp and paper industry, in textile industry, in bakery industry, in food industry, and also in the bioethanol production. So because of the wide range of use in different industries, the present study has been aimed to isolate the fungi from the degrading litter soil sample and then examine their xylanolytic activity. So because of this purpose, first of all, degrading litter samples have been collected from the Osha Wildlife Sanctuary. Then fungal isolation has been carried out with the help of serial dilution technique. So in this technique,
First of all, litter suspension has been prepared. Then it was sequentially diluted up to 4 times. Then each serial dilution is streaked over the Petri plates which contain the potato dextrose agar medium. And this inoculation has been done under sterilized condition, that is in laminar flow. The inoculated Petri plates were incubated at 30 degrees Celsius in an incubator. Then after 2 or 3 days, when the fungal colonies were appeared over the media, the fungal identification has been done. After getting the pure culture of the fungal strains, the xylanolytic activity of each fungal strain has been examined, and it was done on the malt extract agar media, which was supplemented with 1% oat spelled xylene. So for this, spore suspension of the fungal strain has been prepared, and then it was inoculated into the bells, which was already prepared on the malt extract agar media. Then the inoculated Petri plates were incubated at 30 degrees Celsius. After the growth of the fungal strains, the Petri plates were flooded with 0.1% of the Congo-red solution and then washed with 1 molar NaCl solution. And by observing the clear zone or the hydrolyzed zone, the xylanolytic activity of fungal strain has been confirmed. So these are the results of this work. The above picture shows the microscopic view of the fungal strains, and they were identified or characterized or named by their characteristics. And below we can see the Petri plates, which confirms their xylanolytic activity. So here you can see the fungal strains were grown on the media, that is malt extract agar media, having the xylene as a only carbon source. And the fungal strain were grown on the media and they secrete the xylenase enzyme. So xylenases degrade the xylene that is present in the media and form the hydrolyzed zone around its growth. So that confirms that the fungal strain having the xylanolytic activity. To make the clear zone more visible, the Petri plates were treated with Congo-red solution and then washed with 1 molar sodium chloride solution. So I have identified and isolated 26 fungal strains from the degrading litter samples of Orcha Wildlife Sanctuary. And out of the 26 fungal strains, 8 species are belong to Aspergillus genera. So these are the pictures. So the Aspergillus genera, that is Aspergillus species are Aspergillus flavus, fishery, Aspergillus japonicus, Aspergillus flavipus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus tedius, Aspergillus nidulens. Then another genera is Acrimonium implicatum, Baltrinella humicola, Alternaria alternata, Chitomium salami, then Cladosporium species, then Carvolaria lunata, Emericella nidulens, Cunninghamella blacksley. Next is Fusarium oxysporum, Paeciliomyces lilicinus, and another species of Paeciliomyces is Paeciliomyces bariotai. Then Scopulariopsis, 2 species of the Penicillium, that is Chrysogenum and decumbens, Rhodotorula glutenis, Rhizopus stolonifer, Trichoderma viridi, and the Ceratocystis. So in last, it has been concluded that all the fungal strains which were isolated and identified from the degrading litter soil samples, they have the xylanolytic activity. So those fungal strains which have the xylanolytic activity or they have the capacity to produce the xylenase enzyme, they are widely used in the industries because they secrete the xylenase enzyme, and xylenase have the capacity to convert the lignocellulosic waste material or the agricultural waste material into the useful products. So this is all about this paper, and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Jyoti. Very nice presentation. Now I invite Monica Kumari to present her work.
Monica Kumari. Yes, ma'am. Okay. You are a co-host. You can screen share your presentation. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Good morning, ma'am. Monica, are you on mobile? Yes, ma'am. Keep your mobile horizontal. Yes. डाउनलोड किया ना तो करो ना, इस पे नहीं होगा, इस पे मैंने किया था. Ma'am, how to share the screen? There is an option of share. Hello. स्क्रीन शेयर को टैप करिए और जहां आपका खुला हुआ है आपका प्रेजेंटेशन, वहां से आप रन करिए स्लाइड शो में. आप लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे? मैम ऑन मोबाइल. तो आप मोबाइल पे अपना पीपीटी खोल लीजिए. ओके मैम. और जूम से जैसे ही आप होस्ट बनते हो स्क्रीन शेयर करके वापस अपने पीपीटी पे चले जाइए. ठीक है, स्लाइड शो में. Excuse me, ma'am. My screen is visible or not? स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है. Okay, ma'am. So, ma'am, how to share it? There is option of share, but it is not sharing the screen. नहीं होगी, सबकी हो रही है. आप थोड़ा सा देखो उसको. ओके मैम. आपने पहले पीपीटी खोल लो. पीपीटी स्क्रीन शेयर करने के बाद पीपीटी खोल लो. मैम पीपीटी ओपन है. तो आप हाँ, आपका एब्स्ट्रैक्ट तो शो हो गया. ओके मैम. मैम नाउ प्रेजेंटेशन इज विजिबल और नॉट? Your abstract copy is visible. Okay. Presentation is not visible. First you open the presentation. तभी तो visible. Presentation is open. जहां आपने सेव कर रखी है फाइल अपनी,
प्रेजेंटेशन मैम वाला वही, हाँ वही बिल्कुल। स्क्रीन ओपन है। वही तो इसके बाद है क्या प्रेजेंटेशन? फाइल वर्ड में है क्या? नो मैम, पीपीटी आई एम शेयरिंग जस्ट। आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करें। हाँ यस मैम, आई एम डूइंग जस्ट अ सेकंड एंड डॉक्यूमेंट documents. Ma'am, it is showing unsupported document file. Please select the image or PDF document. मैम आप अपनी तैयारी एक बार देख लें, तब तक ओके हम मैम, हाँ जी, आप नेक्स्ट का स्टार्ट कर लीजिए मैम, मैं लैपटॉप पे कनेक्ट करके देखती ओके हूँ। ओके मैम। नाउ आई इनवाइट नेहा अवस्थी टू प्रेजेंट हर वर्क। नेहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई एम Thank you मेकिंग so यू much, ma'am. को होस्ट बना रही हूँ मैं आपको। नाउ यू Sure, कैन ma'am. प्रेजेंट। Yes, ma'am, it's done. Keep Neha, keep your mobile horizontal. Yes, ma'am, it's done. Okay, done. Okay, ma'am. Thank you so much for providing the opportunity, ma'am. It's a great privilege to be with the Department of Botany, JDB Girls College. I, Neha Avasti, presenting my presentation on in vitro culture and phytochemical screening of endangered medicinal plant Celestris paniculatus wild in human welfare of Hadoti region. First of all, these all are the contents in my slide. In my presentation, plant diversity in Rajasthan, introduction of plant Celestris paniculatus, which we are going to be research on this, material and methodology, tissue culture and micropropagation studies, which we are doing on the in all these research in this. Physiochemical evolution of plant metabolites, antimicrobial activities, and all the result and discussion of all my work. First of all, we are going to discuss about the plant diversity in Rajasthan. India is one of the 12 mega biodiversity center of the world. Many of the region in India having a rich diversity of medicinal plants. Normally हमें पता है कि इंडिया में काफी ज्यादा biodiversity centers जो हैं वो यहाँ पर present हैं और राजस्थान में जो है हमारे यहाँ काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट जो है फ्लोरा मिलते हैं। हमारा राजस्थान जो है फ्लोरा और फौना के नाम पर काफी रिच है। यहाँ पर काफी सारी ऐसी रिच मेडिसिन वाले फ्लोरा मिलते हैं और जिनका यूज जो है हम सिंथेटिक ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स, आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं। जस्ट बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो काफी ज्यादा बैलेंसिंग इफेक्ट शो करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम और मेंटल सिस्टम पर। इसलिए ये जो है हमारी बॉडी का फिजिकल कंडीशंस को, अनबैलेंस्ड फिजिकल कंडीशंस को बैलेंस करने का काम करते हैं, डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने का काम करते हैं। ये सारे रीजंस हैं। इन रीजंस की वजह से भी और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर मेडिसिनल पर्पस के 2500 से अबोव प्लांट्स जो हैं, प्लांट स्पीशीज हमारे यहाँ मिलती हैं जिन्हें हम कमर्शियली यूज करते हैं और जस्ट बिकॉज काफी ज्यादा इन्हें कमर्शियली यूज करने की वजह से ये सारी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती चली जा रही हैं। अभी आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, हमारा रिसर्च टॉपिक जो है वो सिलेस्ट्रिस पेनिकुलेटस है। सिलेस्ट्रिस पेनिकुलेटस एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे राजस्थान रीजन में या कहें हाड़ौती रीजन में काफी ज्यादा एंडेंजर्ड कंडीशन में मिल रहा है। सिलेस्ट्रिस पेनिकुलेटस बेसिकली सिलेस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये काफी ज्यादा मिलता है। अब हमारे राजस्थान का जो क्लाइमेट है या बेसिकली जो हाड़ौती रीजन का जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है
ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग। सो ये प्लांट हमारे यहाँ काफी कम नंबर्स में ग्रो हो रहा है, और जो हमारे रीजन में मुश्किल से हमें इसके 5 या 10 प्लांट जो हैं वो देखने को मिले हैं। इसे नॉर्मली जो है वो मालकांगनी, ब्लैक ऑयल ट्री, ज्योतिषमती, इंटेलेक्ट ट्री या बिटर स्वीट के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट बिकॉज इसमें फाइटोकेमिकल एक्टिविटीज जो है वो प्रेजेंट हैं, इस वजह से काफी ज्यादा डिजीज को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है इस प्लांट को। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, जस्ट बिकॉज आप हमें सबको पता है ये चीज कि अगर प्लांट एंडेंजर्ड कंडीशन में आया है, इट मीन कि वो काफी ज्यादा ओवर ग्रेजिंग, ओवर कटिंग का शिकार हुआ है। तो जस्ट बिकॉज सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस जो है वो इसीलिए एंडेंजर्ड कंडीशन में मिला है। हमें ये राजस्थान की चंबल वैली में MHTR यानी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के रीजन में हमें मुश्किल से 1 या 2 प्लांट जो है इसके मिले हैं। दरा, उम्मीदगंज, बोराबास रीजन में, रावत भाटा रीजन में। तो ये हम अगर ऑल ओवर मिलाकर के बात करें तो हमें अपने रिसर्च फील्ड के दौरान हम इसके लगभग 10 से 15 प्लांट जो हैं वो हमें मिले हैं यहाँ पर। ये प्लांट जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव चीजें दिखाता है कि ये कोल्ड एंड कफ इन्फेक्शंस को ओवरकम करने के लिए इसे यूज किया जाता है। अल्जाइमर, अस्थमा, एक्जिमा, लेप्रोसी, फीवर, आर्थराइटिस या स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में बात की जाए तो काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए इसे यूज किया जाता है। काफी ज्यादा रिसर्चेस के थ्रू इसके बारे में पता चला है कि फार्माकोलॉजिकल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सीडेंट और बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो हैं इस प्लांट में पाई जाती हैं, और एक प्रॉपर एपेटाइजर और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा सिक्योर करने के लिए या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए जब इस प्लांट का यूज किया जाता है, तो इसलिए इस प्लांट को काफी ज्यादा इफेक्टिव ब्रेन टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस की अकरेंस जो है, वी हैव टू नो द अकरेंस ऑफ सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। सो हमने जो हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में फाइंड आउट किया है, तो उस वो अकरेंस हमें पता करना बहुत ज्यादा जरूरी था। प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग, ओवर कटिंग की वजह से प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो हमें आर्टिफिशियल मैनर में उन प्लांट्स को वापस से ग्रो करना पड़ेगा। सुटेबल मीडिया के साथ हमें उसे ग्रो करना होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो हम इन विट्रो टेक्निक्स में यूज करेंगे। इस प्लांट की जो फाइटोकेमिकल और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, उन्हें फाइंड आउट करना ज्यादा जरूरी था, ताकि जिससे हमें ये पता चल सके कि ये प्लांट जो है वो किस किस डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसकी एक्चुअल मेडिसिनल वैल्यू क्या है। These are the material and methodology. First of all, we are collecting the plant and we're taking the tissue culture and micropropagation studies over there, and phytochemical evolution of plant metabolites, and we are doing GCMS analysis of steroids by the leaves of Celestris paniculatus, and the antimicrobial activities with some of the antimicrobial greens. This is the next slide. This is the next slide which we are collecting the plant. So Celestris paniculatus जो है वो प्लांट हमें मिला है मोस्टली कोटा यूनिवर्सिटी का जो पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, उस पुरानी बिल्डिंग में हमें कोटा यूनिवर्सिटी रीजन में 1-2 प्लांट वहां पे हमने इसके फाइंड आउट किए। देन चंबल वैली, बोरखेड़ा, रावत भाटा रीजन, ये सारे हाड़ौती के रीजन्स जो हैं वो हमने इसमें कवर किए। और जो ये प्लांट है वो अगस्त और सितंबर में सबसे ज्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शो करता है। सबसे हाई लेवल पे जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है वो अगस्त सितंबर यानी कि विंटर सीजन के आसपास जो है इसका स्टार्ट होता है। इसके लिए हमने प्लांट को कलेक्ट करके उसे एयर ड्राइड और ग्राइंडेड कंडीशन में पाउडर फॉर्म में यूज किया। पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल और वाटर के साथ हमने इसे ट्रीट किया है। दिस इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक। अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में, हमें टिश्यू कल्चर टेक्निक की जरूरत क्यों पड़ी? जस्ट बिकॉज कि प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड कंडीशन में आ गया, और उस प्लांट को हमें आर्टिफिशियल मैनर में लेबोरेटरीज फैसिलिटीज के दौरान हमने उसे वापस से उस प्लांट को रीग्रो करने का स्टार्ट किया। तो इसलिए हमें उसके कुछ प्लांट सेल्स, टिश्यूज और कुछ ऑर्गन्स जो हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स जो होते हैं वो, और उन्हें हम एक पर्टिकुलर नॉन कंपोजिशन के साथ ट्रीट करते हैं, एंड आफ्टर देन हम उस प्लांट को एक आर्टिफिशियल मैनर में ग्रो करते हैं।
ये these all the process is known as micropropagation. So micropropagation के लिए सबसे पहले हमने प्लांट कलेक्ट किए हैं. प्लांट कलेक्ट करने के बाद हमने उसका एक्सप्लांट सेलेक्ट किया. वी आर सेलेक्टिंग द एक्सप्लांट लाइक young leaves and young stems. Culture media we are selecting like Murashiki and scoop media. Aseptic conditions we are providing it, and doing the forming the callus through the micropropagation. So now we are discussing about the phytochemical screening of this plant. These all are the phytochemicals: carbohydrate, protein, amino acid, phenol, flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, steroids, terpenoids. These all are the phytochemicals which we are screened in this plant. एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए हमने मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट के साथ प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उन्हें हमने यूज किया है, और उसे यूज करने के साथ साथ हमने जो है अलग अलग टेम्परेचर पर उसे अलग अलग टेम्परेचर के साथ हमने उसे 24 आवर्स तक रोटेटरी शेकर के ऊपर रख करके और उसका फिल्ट्रेशन रेडी किया, और फिर उसके बाद उसे हमने एयर टाइट बॉटल्स में कवर किया उसे ड्राई करने के बाद. और ये सारे प्रोसेस जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए हमने यूज किए. इसके अलावा जो हमने कुछ क्लिनिकल आइसोलेट्स को यूज किया है: इस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्यूडोमोनास, फ्यूजेरियम कैंडिडा, एस्पेजिलस नाइगर, पेनिसिलियम, जो कि हमें प्रोवाइड किए गए एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के द्वारा. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर. जो हमने प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया टिश्यू कल्चर का रिजल्ट एंड डिस्कशन के बारे में. सो हमने अलग अलग तरीके के ग्रोथ हार्मोन्स के साथ यूज किया, और सबसे पहले हमने सिंगल ग्रोथ हार्मोन्स के साथ ट्रीट करा प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स को. हमने यंग लीव्स एंड यंग स्टेम्स को यूज करके, और केवल 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के साथ जब हमने इसे ट्रीट किया तो इसने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं शो किया प्लांट ने. देन हमने नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के साथ भी सिंगली यूज किया. सिंगली बीएपी के साथ जब हमने इसे यूज किया तो प्लांट ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स शो नहीं किया. सो फिर हमने 2,4-D और NAA इन दोनों ग्रोथ हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को मिक्स करके और अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ जब हमने इसका कैलस फॉर्मेशन किया तो कैलस फॉर्मेशन जो है वो हमें 23.6 परसेंटाइल हमें मिला. इसके अलावा जब हमने बीएपी के साथ इसे ट्रीट किया तो द कैलस फॉर्मेशन वाज निल. मतलब हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो है वो इस प्लांट में शो नहीं हुई. आफ्टर देन बीएपी और एनएए के साथ जब हमने इसके दोनों के ग्रोथ हार्मोन्स के साथ जब हमने इसकी कंसंट्रेशन लेवल को ट्रीट किया तो हमें सबसे ज्यादा जो है कैलस फॉर्मेशन 86.4 परसेंटाइल हमें यहाँ पर मिला है, जो कि सबसे ज्यादा है. ये हमें शो हो रहा है 2 वीक्स के नोडल फॉर्मेशन जो हैं वो इस तरीके से दिखाई दिए. 3 वीक्स में बीएपी और एनएए के साथ जब हम लोगों ने ट्रीट किया तब नोडल फॉर्मेशन जो है वो वीक वाइज अलग अलग चेंज हुआ और ग्रोथ किया. 5 वीक्स में जो नोडल फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा ग्रो हुआ विद द कंसंट्रेशन ऑफ बीएपी एंड एनएए. सो डिस्कशन में क्लियर होता है जब हमने काइनेटिन के साथ इसे यूज किया तो काइनेटिन के साथ जो है प्लांट ने बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं किया. अदर देन बीएपी और एनएए के साथ सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है शो किया कॉम्पैक्टली ब्राउन हाई कैपेसिटी वाला प्रोफेसली प्रोफेस्ड कैलस जो है वो हमें यहाँ पर फॉर्म हुआ. नाउ फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग. यहाँ पर जो है हमें इस पूरी टेबल में शो हो रहा है कि हमने सबसे पहले L इज डिनोटेड विद द लीव्स एंड R इज डिनोटेड विद द रूट्स. हमने लीव्स और रूट्स के जो पाउडर हैं उसके साथ जब हमने अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इसे ट्रीट किया, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड वाटर के साथ जब हमने इसे ट्रीट किया तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिनॉल, फ्लेवोनॉइड्स मींस सारे के सारे जितने फाइटोकेमिकल्स थे उन्होंने पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन के साथ ज्यादा क्विक रिएक्शंस नहीं दिखाए हैं. इनफैक्ट जो अमाउंट है वो भी हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया है यहाँ पर. अदर देन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में इसके मॉडरेट और सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो हमें देखने को मिले हैं. सबसे ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स, फिनॉल और टैनिन, टर्पेनॉइड्स, ये सभी जो हैं अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है वो शो कर रहे थे. इट मीन कि इस प्लांट में फ्लेवोनॉइड, अल्कलॉइड, टैनिन, सैपोनिन ये सारे जो हैं
सारे फाइटोकेमिकल्स जो है वो काफी ज्यादा मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट हैं. This is the GCMS profiling of steroid isolators from the leaves of plant Celestis paniculatus. Here we can easily see we have 14 compounds here. 14 कंपाउंड जो है वो हमने इसमें आइसोलेट किए हैं जीसीएमएस प्रोफाइलिंग के थ्रू, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया ऑफ परसेंटाइल जो है वो शो कर रहा है 2,6 बिस डायजो एडामेंटीन, और सबसे ज्यादा कम जो है वो 5 स्पाइरो साइक्लोपेंटीन इंडोल मिथाइल. तो ये दोनों हमने स्टार करके शो किए हैं कि सबसे ज्यादा आरटी वैल्यू शो करने वाला और सबसे कम आरटी वैल्यू शो करने वाला जीसीएमएस प्रोफाइलिंग के थ्रू हमने स्टेरॉइड जो है वो फाइंड आउट किया है. ये ग्राफिकल व्यू में हमने उसी चीज को शो किया है कि सबसे ज्यादा जो है एरिया ऑफ परसेंटाइल हमें मिला है, हाईएस्ट अमाउंट जो है वो 2,6 बिस डायजो एडमेंटीन का, जो कि ग्राफिकल व्यू में क्लियरली दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. हमने जितने भी माइक्रोबियल स्ट्रेन्स को हमने यूज किया था यहाँ पर मेथनॉलिक और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट के साथ, तो उसके जो हमने प्लांट सेलेस्टिस पेनिकुलेटस यूज किया है, तो प्लांट के स्टेम बार्क और लीव्स, इसके पाउडर को जब हमने मेथनॉलिक और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट के साथ ट्रीट किया विद द माइक्रोबियल स्ट्रेन्स जो कि हमें प्रोवाइडेड थी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के थ्रू. सो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज जो है उसने सबसे ज्यादा लीव्स के साथ मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट में अपना रिस्पॉन्स शो किया. एंड ये जो हमने स्टार करके चारों स्पीशीज जो हैं दिखाई हैं, स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलियम स्पीशीज जो हैं, ये सबसे ज्यादा हाई या रिच अमाउंट में मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म के साथ अपनी एक्टिविटी या जोन ऑफ इनहिबिशन जो है वो शो कर रही थी. अदर देन फ्यूजेरियम जो है, फ्यूजेरियम स्टेफाइलोकोकस ने बिल्कुल भी लीव्स का जो पाउडर था उसने बिल्कुल भी नहीं जो एक्टिविटी है वो नहीं शो करी है. कैंडिडा एल्बिकेंस ने भी क्लोरोफॉर्म के साथ कोई एक्टिविटी शो नहीं की है. तो ये सारी चीजें जो है वो हमें माइक्रोबियल स्ट्रेन्स के थ्रू क्लियर हुआ. ये हम इजीली देख सकते हैं. ये दीज आर द स्लाइड्स ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज ऑफ क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट्स. These are the antifungal activities of chloroform extracts, antibacterial activities of methanol extracts here, and the antifungal activities of methanol extracts here. We can easily see here. So all over the conclusion is here. प्लांट सेलेस्टिस पेनिकुलेटस जो है उसे इनविट्रो कल्चरिंग की इसीलिए जरूरत हुई जस्ट बिकॉज वो एंडेंजर्ड स्पीशीज था. हम उसे एक पैथोजन फ्री और जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. आज के टेक्निकल सेशंस में डॉक्टर प्रोफेसर दुबे सर और पद्मनाभ सर जो है उनके थ्रू भी हम लोगों ने इन्हीं चीजों को सीखा कि हमें एक नया पैथोजन फ्री और जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी चाहिए होती है, इसलिए हम इनविट्रो कल्चरिंग को यूज करते हैं. सेलेस्टिस पेनिकुलेटस जो है वो एक काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू शो करता है. स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इन सबको ओवरकम करता है और सिंथेटिक ड्रग्स की फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं. फार्मा कंपनीज जो हैं वो काफी ज्यादा इन चीजों को आर्टिफिशियल मैनर में रेडी करती है. इसके जो एंटी माइक्रोबियल और जो एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल एक्टिविटीज हैं उन्हें हम काफी ज्यादा उनके थ्रू हमें पता चला है कि ये जो प्लांट होता है वो काफी ज्यादा एनहांस करता है मेमोरी पावर को. तो मेमोरी को शार्पन करने के लिए भी इस प्लांट का यूज किया जाता है. इनफैक्ट जब हमने इसके नॉर्मल एक्सट्रैक्ट को ओरली ट्रीट किया. यस मैम, प्लीज बी ब्रीफ because our other researchers are in the pipeline and we should give time to all participants. Yes ma'am, it's last say a single line and sum up. Sure ma'am. So these all are the main things from the plant Celestis paniculatus. It's a very significant plant. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Kanchan Lata to present her paper. Okay.
Good afternoon, everyone. Myself, Kanchan Kumar, Research Scholar, Department of Botany, Bihari College, Jhansi. I'm doing my research under the supervision of Dr. T.K. Sharma. Today, I'm here to present my research paper on isolation and identification of mycorrhizal spores from Bipin Bihari College, Jhansi, UP. Mycorrhizae are symbiotic relationships that form between fungi and plants. The fungi colonize the root system of a plant, providing intrinsic water and mineral component. Plants provides the fungal carbohydrates formed from photosynthesis. There are two major groups of mycorrhiza, endomycorrhiza and ectomycorrhiza. Endomycorrhiza associate with the cortex region of the root system, while ectomycorrhiza associate with the outer layer of the root system of a host plant. This is the objective is to isolate mycorrhizal spores from rhizospheric soil. To isolate mycorrhizal spores from soil, the soil sample was collected from the botanical garden of Bipin Bihari College, Jhansi, and then it has been brought to the laboratory, which was then sieved with Nalgene sieves for separation of mycorrhizal spores. This is the protocol of wet sieving of soil sample. First of all, 200 ml warm water in a beaker is taken and add 50 gram of soil in it and mix thoroughly. And after that, allow the heavier particles to settle down and collect the upper residues and wash these residues 4 to 5 times under tap water. And after that, transfer residues in centrifuge tube and centrifuge these residues at 4000 rpm for 5 minutes, and then remove supernatant to pellet at 5% sucrose solution, and then again recentrifuge at 4000 rpm for 5 minutes and remove supernatant and wash pellet with distilled water, and then collect sample in Petri plate. And after that, observe under microscope for mycorrhizal spores, and all spores were collected in a watch glass and preserved in Ringer solution for future use. The next protocol is size measurement of spores. The size of spores were measured by micrometry, the calibration of ocular micrometer using stage micrometer. The count number of divisions exactly overlapped in two divisions of stage micrometer using following formula. The formula is 1 division on ocular micrometer in millimeter equal to known distance between two lines on stage micrometer upon number of divisions on ocular micrometer. The distance of ocular divisions can be calculated, and afterwards place sample slide and count the number of ocular division actually coinciding spore. Excuse me. The image 1 shows divisions of stage micrometer and ocular micrometer, and image 2 shows number of ocular divisions with spore. Mycorrhizal spores have been isolated and identified on the basis of shape, size, and color. Total 5 genera of mycorrhizal spores are being reported from rhizospheric soil samples collected from Bipin Bihari College, Jhansi are Aculospora, Glomus, Gigaspora, Scutellospora, and Anthrophosphora with 19 species. The next is morphological description of isolated mycorrhizal spores. The first is Aculospora brasiliensis. These spores are sparkling brownish yellow appearance in water under reflected light. These spores are approximately 200 micrometer in size, globose, ovate in shape with roughened and pitted wall surface. This is the picture of Aculospora brasiliensis. Next is Aculospora levis. Aculospora levis spore are large, generally globose, ellipsoid, and thin-walled. The spores were measured around 250 micrometer in diameter. Surface of spore smooth or dull roughed. Next is Aculospora thomai. Spore found singly in soil and occasionally globose, subglobose, ellipsoid, or irregular shape, approximately 450 micrometer in diameter. Spores dark brown and or dark brown to orange yellow in color. Spore wall thick and multi-layered. Next is Anthrophosphora senkai. Spores are hyaline globose to subglobose, sometimes ovoid in pear shape, 100 micrometer in diameter with smooth wall surface. Spores appear sparkling white when mature. Next is Scutellospora nigra. These spores are globose and ellipsoid with black color, 300 micrometer in diameter, and spore surface roughed and pitted. Next is Scutellospora scutata. Spores hyaline white to yellow-brown, globose, subglobose, and irregular in shape.
350 micrometer in diameter with rough and smooth wall surface. Next is Gigaspora albida. Gigaspora albida formed singly in soil, dull white with a light yellow color, occasionally ellipsoid and mostly spherical with about 250 micrometer in diameter. Wall surface of spore may be smooth, roughened or pitted. The next is Gigaspora gigantea. These spores also form singly in soil, about 400 micrometer in diameter, globose to ellipsoid with brownish yellow color. Surface of spores are thick and smooth. Next is Gigaspora margarita. These are formed singly in soil, approximately 350 micrometer in diameter, yellowish brown to reddish brown in color with smooth wall surface. The next is Glomus constritum. These spores are globose, ovate, and ellipsoid in shape with 200 micrometer diameter. Color of spores are black or brownish black, and surface of Dear spore are participant, smooth. excuse me, you just sum up because Yes, time ma'am. is running short. We have Sure, ma'am, many sure. candidates in the pipeline. So please be brief and come to the discussion part. Ji, ma'am. Your work is very good, but please sum up. Okay, ma'am. Thank you. So next is Glomus flavisporum. We can see here in the image. Just चित्र दिखाते हैं. Glomus fasciculatum, Glomus magnicollis, Glomus epigium, Glomus introradicis, Glomus deseticola, Glomus mosaic, Glomus occultum, and last is Glomus sinuosum. So this is all about my presentation. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Now over to Poonam. Thank you, Kanchan. Now I invite Omkar Joshi. Omkar Yes, ma'am. Joshi, Yes, ma'am. prepared? Yes, ma'am. कल की तरह तो नहीं होगा? No, ma'am. Ma'am, is my presentation visible? Visible, but keep your mobile horizontal. Yes, ma'am. Yes. Okay. 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 Good afternoon, everyone. Myself, Omkar Joshi, and today I am going to present our research work that is efficient management of household waste biomass. These are the authors of the paper, that is myself, Omkar Joshi, and my mentor, Dr. Smriti Johri. These are the contents of my presentation. Starting with the introduction, first, waste generation and need for its management. As we all know, with exponential increasing population, India is suffering from the problems associated with increase in overall waste generation, as people do not have proper knowledge about appropriate ways for waste management cycle. The generated waste can be of different types like organic waste, plastic waste, paper waste, etc. and it is need to be separated for better waste management. Second, the problems associated with management of household waste. As we all know, throwing or dumping organic waste causes wastage of energy. Biological waste management is not a major problem in rural areas, but in case of urban areas, there is high amount of household biological waste, which can be treated as a source of biomass. Biomass energy is renewable and carbon neutral. Hence, usage of biomass energy. Sorry Yes, to ma'am. interrupt you. Your slides are not moving. You just Yes, ma'am. focus. Your introduction part is visible. So just Yes, ma'am. move the slides and be fast. Yes, ma'am. So coming to the materials used in this work, starting with household biological waste, including different parts of fruits, vegetable, flowers, leaves, and even peels and residual content of food products. Utensil to cover the biomass while burning it, that is for conversion of biomass to the biochar, and LPG connection as a source of energy to burn the biomass. This is the methodology. So I will demonstrate this using this picture. So starting with drying of the biomass. So I dried the biomass under the sunlight for 5 to 6 hours. Then I heat the dried biomass in closed vessel for about 20 to 25 minutes for obtaining the char-like residue. We have to cover the biomass with a utensil for the formation of biochar. Then cool the char-like residue at room temperature
for about 15 to 20 minutes. And after cooling, we need to grind the char-like residue to obtain powder biochar. So results and discussion. The household biochar preparation was successfully carried out using the developed methodology. This biochar can be further used for the purpose of gardening along with the soil, as it is advantageous for soil growing of the plants. While concluding, the research describes an economic, efficient, and easy and ready to use domestic method for preparation of biochar from household biological waste. The method can be significantly decrease the rate of waste generation in every household, as results in better management of waste. This method can be further applied for different purposes, including gardening and production of energy, etc. Lastly, I would like to acknowledge CSIR NEIST for organizing CSIR SRTP program, which provided me this opportunity on working on this project. These are the references I have used. Very nice, Thank you. very nice, nice presentation, Omkar Joshi. And we salute you that you were determined to give your presentation, and you tried a lot yesterday also, but finally Yes, your work is very nice. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Next. Now I invite Monica Kumari to present her work. Yes, ma'am, I'm ready. Ma'am, my PPT is visible? Yes, visible. Start now. Good afternoon, ma'am, and other dear participants. Today, myself, Monica Kumari, I am doing PhD under Dr. Vinay Kumar, who is in Department of Botany, University of Rajasthan, Jaipur. My topic is related to floating treatment wetlands, some work which has been done till now. I am presenting here. The topic is floating treatment wetland system. It is an eco-friendly and sustainable tool to change wastewater profile suitable for survival of aquatic flora and fauna. Now, as we all know, the floating treatment wetland system, it is a combination of hydroponic planting technology, wastewater. मोनिका Yes, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, ma'am. Floating treatment. Here is the structure of floating treatment wetland. In this, there is a floating raft which is floating on the surface of water, and in this there are macrophytes emerging outside, and the roots which are growing in the water surface. On the surface of roots, there is a biofilm formation formed by bacteria and other microorganisms. These microorganisms break down the organic content into the inorganic form that will be later on uptaken by the plants. Now, what is the mechanism of pollutant removal by the FTW system? FTW system removes the dissolved and suspended solids, they remove the nutrients, and they remove the heavy metal ions. The dissolved and suspended solids, these are removed by entrapment, filtration, and sedimentation. The sedimentation is also induced and enhanced by the floating mat by reducing wind wind turbulence and other mixing. The removal of nutrients by FTW
is by the process of physical and chemical action. In this, the bacteria, they cause the nitrification and denitrification processes that causes the breakdown of organic compound in nitrates into simple nitrates and nitrites that will be uptaken by the plants. Here are some of the FTW systems which are used for various wastewater types throughout the world. First of all, it is used in Germany, and then after that, it is used for treatment of municipal wastewater, storm water, industrial effluents. In India, it is used for treatment of polluted river water. The plant bacteria synergism is the current topic of FTW system. Here are Here are the two pictures. In this one picture, there is a floating treatment wetland in the Bengaluru lake, and the another is on the right hand side is of Bengaluru, Hyderabad city of Negnampur lake, in which 3,500 units of FTW are installed for cleaning of water, and the results were so good that the NGO was awarded by government of Hyderabad for their work. Now, some points to be considered during implementation and maintenance of FTW. The tall plants species should be avoided because they can cause sailing and drifting. Also, the sinking of FTW. Sorry to interrupt. Deciduous plant species also should be avoided so that the large amount ground biomass again should not add the pollutants into the water column. Regular harvesting after 5 to 6 months is required. The plant with dense and fibrous root system should be preferred to provide a larger surface area for biofilm formation. The plant species which are tolerant to high pollutant load should be selected. And there is another important point: netting or plastic grid should be used to covered at initial stages to prevent damage from the birds. Now, in conclusion, the decrease in the nitrogen and phosphorus content as well as BOD, COD, TDS and TSS value, which is indicator of decrease in organic content of wastewater, is a good indicator for resuming the lost and decreasing fauna. The FTW removes heavy metal ion. It is also good for the fauna of the aquatic ecosystem, and the increase in dissolved oxygen due to FTW installation, it helps to improve the water quality while providing aerobic conditions for microbial degradation of organic matter. And this condition is beneficial for fish population and other aquatic animals. So in this we can increase the biodiversity of the aquatic ecosystem in our polluted water bodies. Thank you, ma'am. Thank you, Monica. Thank you, Monica. Thank you, ma'am. Now we start poster presentations. Now poster presentation from Suresh Singh. ये कहाँ से है? ये तो पॉज ही रखिए इसको तो पहले. आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. Opportunity to deliver my research work on this platform CTRBEPR 2020.
my work is completely, you say that, based on mycorrhiza, and the title of my today's presentation is Distribution of Mycorrhiza in Wasteland of Kota, Rajasthan, India. So now we know अब इसमें नहीं आ रही, इसमें से आ रही है. and I also told that my work is based on mycorrhiza. अब ये Mycorrhiza, बोर्ड का लग गया you आवाज. all know that mycorrhiza is a symbiotic association actually between plants and fungi. Because different type of microorganisms are live in soil, and all microorganisms carry out various type of activities which are very helpful to plant as well as to the organism. So this is called a particular type of symbiotic association of plants and microbes. So in this association, if fungi are associated with plant, this is called mycorrhizal association. And this is also symbiotic because fungi uptake the nutrients from the soil and find fertility and called human made हो या रोड़ा. अब इस स्टडी में हमने देखना है कि कैसे हम माइक्रोराइजा के थ्रू रिस्टोरेशन कर सकते हैं डिस्टर्ब लैंड का, रिक्लेमेशन भी हमें करना है डिस्टर्ब लैंड का. कि पर्टिकुलर माइक्रोराइजा के स्पीसीज को हम इनोकुलेट करें फॉर रिवेजिटेशन ऑफ सेलेक्टेड प्लांट स्पीसीज. बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट. इस स्टडी के लिए जो आपने स्टडी एरिया कलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हमने कर रखा है कोटा साइट को ही. कोटा, वी ऑल नो अबाउट द कोटा, आल्सो कॉल्ड शिक्षा की काशी इसे कहा गया है. एंड कोटा इज लोकेटेड along the range approx 30 here, because with stove method for study we selected the 4 different sites of Kota. In 4, 1 is controlled, means the undisturbed site, and 3 is disturbed site here we selected. Industrial way disturbed or any type of disturbed site. So 3 disturbed sites are, first is DCM disturbed site. This is here we represented by experimental site A. Second experimental site B is thermal power plant, and third experimental site or disturbed site is C, stone mining area or limestone mining quota slurring stone area. So total sites are 14 between 20 to 80 per plant species in isolate PV LG. Present study here which provide the inventory and comparative assessment of mycorrhiza diversity in disturbed and undisturbed soil in Kota. ये मेन स्टडी का हमारा टारगेट है कि डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब में के नंबर्स को की प्रॉपर्टीज को आपने स्टडी करना. और जो ऑब्जर्वेशन हमने किया इस ऑब्जर्वेशन रिजल्ट को we arrange in this tabular form. First is serial number, second is the species, last 3 are experimental sites A, B and C. So in this observation, we recovered spores are presented on by 4 genera, namely Ankylospora, Gigaspora, Glomus, and Sclerocystis. So 4 genera we were, and if we specify, then you see the spores which were we isolated from the soil sampling and studied studied microscope. So first A represent the Gigaspora margatia, B Sclerocystis, G whole site. So in this slide we see that in experimental site A, if we see, so in A site, if we see the 5th number means the Glomus marcocarpa is maximum 40. Now if we compare with this table, so Glomus marcocarpa, you see that in experimental site A, 5th number Glomus marcocarpa, 40 numbers काफी ज्यादा आपको देखने को मिले. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल साइट ए. इसी स्लाइड फाइनली इस कंक्लूजन और डिस्कशन इन फाइनली मिले इन स्पोर्स के, जबकि अनडिस्टर्ब साइट में इनके स्पोर्स के नंबर ज्यादा मिले. अब disturbed में less number generally may be the presence of trace matter in the polypid sites may be responsible for the less number of mycorrhizal spores in the soil. ये शायद हो सकता है. एक हमने कहा कि कंक्लूजन ये कि आपको जो जनरा हमने आइसोलेट किए उसमें Ankylospora, Glomus and Gigaspora were the most dominant हमें यहाँ पर देखने को मिला. And
One conclusion is that in this study, Now next poster presentation from Kamini.
Now next poster presentation from Durgalal Regar. Hello, good morning. Welcome to CTRBEPR. Anita, Anita, तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? My research tracker topic is today use of mustard pollution for irrigation. Stop share authorize मतलब वीडियो पहले चला लें उसको, पहले वीडियो चला लेते हैं सबसे बढ़िया। Hello, good morning. Welcome to. इससे काम करवाना बहुत मुश्किल है, फिर भी किया। नहीं मैंने आवाज बंद कर दी। नहीं आ रही है।
Then speak क्या होता है? Next poster presenter is Sunil Meena. Neri, अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही?
Next poster presenter is Preeti Berwa. एक मिनट था इसमें इसमें कुछ था बस देख लो Next presenter is Nisha Mehra.
वहां से Now I invite Dr. Alpna Jawhari for vote of thanks. Good afternoon, everyone. It's my proud privilege and pleasure to deliver vote of thanks for this conference. I would like to thank our principal ma'am, Dr. Anita Kothari, for her inspiration and encouragement to organize this conference. I would like to thank our chief advisors, Dr. Satish Saraswat sir and Dr. Madhu Khanna ma'am for their valuable suggestions. Many thanks to our convener and HOD, Department of Botany, Dr. Pratima Shrivastava ma'am for her efforts, enthusiasm, and for suggestions and encouragement for this conference. Thanks to coordinator, Dr. Shuchita Jain madam. I would like to thank our organizing secretary, Dr. Poonam Jaiswal, for her efforts, hard work, and technical support to make this conference successful. Thanks to member of organizing committee, Mrs. Anita Malav and Dr. Mamta Chaudhary for their contribution and regular support. I would like to thank our keynote speakers, Dr. N.K. Dubey sir, who delivered very informative lecture on biodiversity and its conservation. Dr. Padmanath Dwivedi sir for his lecture on micropropagation of plants. Thanks to Dr. Somna Datta ma'am for her lecture on very useful topic, which is useful for students. And thanks to Dr. Lalit Batra, who delivered a lecture on antiviral protein from USA. Research scholars and PG students will be benefited by their useful suggestions. Last but not the least, I would like to thank all participants, speakers, all my students, and Mrs. Rachna and Mrs. Chandrabala for making this conference successful. Once again, I thank everyone. Have a good day. Thank you all participants. Now leave the conference room. Yeah. Now we take your leave till our next conference. Thank you all participants. Now you can leave conference room. Thank you so much.